Okay, good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Any doubts? Vishal, your doubt was solved? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. I was able to figure out in a minute here when you gave the code on Slack. Any other doubts? Nobody has any doubt? Ma'am, Armstrong वाला question बता दीजिए. Okay, Abhishek. Can you tell me the page number on which this question is? (21). Page number 21. Armstrong, he is talking about the one which we discussed in module 1, right, Abhishek? Because there only Armstrong number is there. Shiva, you are talking about palindrome, I think. Ma'am, hello. हाँ, हाँ. Ma'am, I have doubt on palindrome number, string वाला question, 21 page number. अच्छा अच्छा, अभी अभिषेक का डाउट ले लूं फिर. I'll take your doubt also. Okay, ma'am. ये वाला कॉन्टेस्ट देख के नहीं बोल रहा, ये मैं खुद से बोल रहा हूँ. अच्छा, Armstrong number is a number which, like 153 is Armstrong number. Why it is Armstrong number? Because if you extract each digit and take its cube, then the sum obtained will be equals to the number. Let me discuss it on whiteboard. Okay, so is whiteboard visible? Yes. Let's suppose the number is 153. Now you need to check whether it's Armstrong number or not. So Armstrong number, extract each digit of this number. So the first digit which you will be able to extract will be, tell me Abhishek, the first one? No. The first digit you can extract from this number is 3. Taking the modulo by 10, you will be able to extract 3 and take its cube. If you take its cube, then sum up it with next digit. Next digit will be 5, right? So take 5 and cube it. Okay. Similarly, 1 is there. So 1, extract the next digit and then take its cube. So 1 cube, which is what? 3 cube equals to 27, right? 5 cube equals to 125 and 1 cube equals to 1. So now when you add up all these numbers, you will be able to obtain 153, which is equals to, अगर 4 digits होगी तब 4 से multiply करेंगे. I don't know, like if it is given in the question that you have to take the number of digits, in that case you will consider this key. अगर 4 digits होंगे, then you have to take part 4 here. But like the questions which is generally practiced, their cube is taken into consideration. अगर ऐसा होगा कि पार 4 वाली चीज होगी तो शायद वो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा. ओके, सो इज द लॉजिक क्लियर? डू यू वांट मी टू डिस्कस द कोड आल्सो? Yes, okay. So tell me, the first, let's suppose we have taken the input of this number in a number num. Okay. Next, what we'll be doing is we'll be extracting the digits. Extracting the digits. So let's suppose, now tell me, we have to check whether it's equal to its previous number or not. So we require one more variable for storing the same number. One has to be modified and the other one has to be checked, right? So let's suppose we have taken a duplicate variable, which is initially equals to now. Okay. Now you will modify this dupe variable. Dupe variable contains what? 153. Okay. You will keep a check with up to when dupe is greater than 0. Then you have to do what? First of all, you have to extract the digit. So how will you extract the digit? Dupe is the num only. That is dupe modulo 10. You will be able to extract what? 3 by this process.
And after you take this, then let's suppose we take a variable sum. Okay, let's suppose we take a variable sum which is initially 0. Okay, then what you need to do is sum, you have to add it with what? Digit into digit into digit. Just you have to take cube. So that's why we are doing digit into digit. Okay. Next, we have to modify this due for taking the next digit. Now, if you want to like obtain 5, you will have to divide this due by 10. Yes. Tell me. Okay. So you have to keep on doing this until and unless the number is greater than 0. And when the number becomes like equals to 0, after that, you have to just keep a check whether sum is equals to num or not. And if it is so, then it is Armstrong number, else not. Is it clear? हाँ? लूप चलाया while वाला, तो उसमें हमने पहले 3 को बाहर निकाल लिया, फिर उसके बाद 3 into 3 into 3 करा. हाँ, फिर उसको सम में स्टोर भी करा लिया. सम एक वेरिएबल है जिसमें वो जो भी लाइक क्यूब का नंबर आएगा उसे उसमें स्टोर करा लेंगे. सो बेसिकली फर्स्ट टाइम सम विल स्टोर 3 क्यूब, दैट इज 27. उसके बाद वी हैव टू एक्सट्रैक्ट 5. So for what, how will be able to extract 5? Can you extract 5 using the same number? No. You have to divide it first by 10. Now the number becomes 15, right? If you divide 153 by 10, integer division, then it will give you 15, right? Yes. Now 15 is again greater than 0. So here you will extract the digit, which will give you what? 5. Now in the same sum variable where 27 was stored, there 5 cube will also get stored. 5 cube will also added up in that particular sum variable. Okay. And then again, you have to divide the dupe by 10. Like duplicate number now was 15. So if you divide 15 by 10, it will give you 1, right? So still 1 is greater than 0. So you will extract the digit by what? Dupe modulo 10. So 1 modulo 10 is again 1, right? Then take 1 cube and store it in sum, like add up it to sum. And then again you divide duplicate by 10, that is 1 divided by 10 will give you 0, right? Yes, ma'am. अगर line 5 ना लिखें तो तब भी चलेगा ना कोड? Line 5 कौन सा line 5 है? Int dupe equals to num. क्यों नहीं लिखेगा? Tell me. Duplicate एक वेरिएबल है जिसमें मैंने num को स्टोर करा लिया. अगर नहीं तो और while loop के अंदर num is greater than 0 लिख दें. अच्छा, you are saying कि यहाँ पे num को ही modify कर दूं ना? You are saying instead of this. Now tell me at last how will you compare कि ये initial number के बराबर है क्यों नहीं? क्योंकि num तो अभी 0 हो जाएगा ना, तो उसके बाद sum क्या num के बराबर रहेगा? क्योंकि num को आपने modify करके 0 कर दिया अभी. ये लूप के बाद num की क्या वैल्यू होगी अगर आपने num पे ये चीज ये की? अच्छा, फिर वो 153 15 बन जाएगा. After this loop 153 which was basically stored in num will now become equals to 0. Now can you check is sum equals to sum में तो 153 stored होगा for sure, but num now has become 0. तो इसलिए उसको एक अलग से वेरिएबल में स्टोर करा लिया और उस वेरिएबल को मॉडिफाई करा लिया. Okay, ma'am. Got it? Yes, ma'am. Okay. So Vishal had doubt in this question. Vishal, you had doubted which question? Palindromic. Palindrome. Yes, ma'am. 21 page number. Yes, ma'am. Okay. Should I discuss the logic as well? लॉजिक समझ गया मैम मुझे, बट कोड में थोड़ा दिक्कत आ रही है मुझे. अच्छा, कोड डिस्कशन में है. इंटीजर वाला मतलब हो गया, बट जब स्ट्रिंग अपन ले रहे हैं तभी थोड़ा प्रॉब्लम जा. हाँ. Now tell me how will you be able to access a particular character in a string? क्या syntax यूज करते हैं किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग में? Yes, cn dot next dot char add 0. No. Dot char add 0. That I'm not asking. I'm asking. Let's suppose I gave you a string. Let's say Vishal. Now I told you to give me the character which is present at 2th index.
So what syntax you will use for the same? टू कैसे? कैर एट उसके जगह पे अपन 2 लिख देंगे. Exactly. So let's suppose the name of the string is str. So what you will write is str dot char at, I have asked for 2th index. 2, yes, yes. So here, if you do so, will you be able to give me s, which is second, like 2th index character? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. So same thing, what we are doing is, we are using while loop. Do you know how to like using while loop 2 pointers? वो concept clear है ना? Yes, ma'am. So basically what we are doing, using the same first pointer we are keeping on the 0th character, and right pointer we are keeping on the last character. And then while left is lesser than right means those pointers do not coincide. Till then you have to continue this thing. And what you are doing is, if anywhere you are able to find, let's suppose we have some character A, B, C, then let's suppose it's T and A. So you kept your left pointer initially at the same and right pointer at this, right? So you will compare, is L equals to R? If L is equals to R, don't do anything. Just since L, like character which is present at L and character which is present at R is equal, what we need to do is, we just have to shift both the pointers. So L will be pointing here now and R will be pointing here, correct? आप मुझे Yes, बताओ ma'am. why we are writing this false? Because कि अगर एक जगह भी मुझे ऐसा मिल गया कि characters mismatch कर रहे हैं दोनों pointers पे, तो I will be able to conclude that this is not a palindromic string. Yes, right? yes, yes. तो for that purpose, क्योंकि एक भी अगर मुझे ऐसा केस मिल जाता है, तो I will for sure conclude कि it is not palindrome. उसके लिए we have written this condition. Okay. ठीक है? उसके बाद what we are doing is, since we face that the character which is present at Lth index and the character which is present at Rth index are not same, so what we need to do is we just need to return false from there. Just straight away return false. Okay, now is it clear? Yes, ma'am. Okay. Any more doubts? Hello, ma'am. हाँ. कल का क्वेश्चन हेलो एक एक करके मैम वो कल का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाया. अच्छा सागर, you were there? नहीं, Abhishek, अच्छा Abhishek, like can you share your screen? Yes, ma'am. ठीक है. बाइनरी एग्नोस्टिक क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, मैं भी पहली बार सुन रही हूँ. Abhishek, share your screen. Okay. So rows, columns, matrix you're making. I think in this question you had to take tab spaces, right? Tab spaces लेना था इस question में. Show me the question description. हाँ. Output format दिखाना, output format. Print, हाँ, make sure to use tabs to separate elements within the same line. ये लिखा है ना? तो you have to take tab spaces. तो line number जहाँ पे आप print करा रहे हो, हाँ, यहाँ पर /\t लिख दीजिए. And also you need to change the line, right? Line को change भी करना है. Add a system.out.println after line number 36. Now run the code. First run the code, then submit. First run the code. अच्छा, no sample test cases, then submit. कौन बोल रहा है? थैंक यू मैम. हाँ, ओके. किसने बोला कि ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए?
अभिषेक अभिषेक अच्छा सागर, ठीक है. Abhishek, you stop sharing your screen. I will discuss this question. Let me share the screen. Okay. Sagar, I already discussed this question, but no problem. We'll discuss it again. The question says, let's suppose you are given a matrix. Okay, it has some values. It may or may not be square matrix. Okay. Okay. Now what you need to do is, you need to tell me which row number is this. This is 0th row number. This is first row number. This is second row number. This is third row number. And this is fourth row number, right? What you need to do is, you need to swap every even indexed row with the odd indexed. Now tell me, if 0 is even indexed row, then 1 obviously will be odd indexed. 0 even number hai, तो 1 odd number होगा. Now you need to swap all the corresponding elements. मतलब रो कॉलम पे जो वैल्यू है, जिस रो में प्रेजेंट हो आप, अगर वो रो इवन रो है, तो उसके रो कॉलम वैल्यू पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है, उसको आप किससे स्वैप करना है? यू हैव टू स्वैप इट विथ रो प्लस 1 कॉलम वैल्यू. मतलब रो नेक्स्ट रो में उसी कॉलम वैल्यू पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, you have to swap them together. So 2 and 4 will be swapped. So 4 comes here and 2 comes here. Okay. But one more thing. 0, you can do the same thing for 0 also, 2 also. But 4 is also even numbered. 4 is also even numbered, right? But does there exist odd numbered row for this? क्या 5 exist करता है? नहीं exist करता है. So for that purpose, you can run out of bounds. So for that purpose, you have to add a check whether row plus 1 is lesser than total number of rows or not. Okay, so let's discuss this. 4 2 got swapped, and similarly 3 5 will also get swapped using the same logic. Yes, Sagar. And 4 6 will also get swapped, and simultaneously these also will get swapped. Then you come for the, will you go to 1 now? Tell me. अगर 0 के लिए देख लिया, 0 वाली वैल्यूज के लिए स्वैप कर लिया, तो ऑब्वियसली वी नो कि 1 वाला जो होगा वो ऑड ही होगा. तो वी विल नॉट गो टू 1, वी विल स्ट्रेट अवे गो टू टेक 2 जंप्स एंड कम टू दिस इंडेक्स्ड रो. मतलब सेकेंड इंडेक्स्ड रो पे आ जाएंगे. ओके, नाउ व्हेन वी कम टू सेकेंड इंडेक्स्ड रो, the next will be obviously odd one. अगर 2 even है तो 3 odd होगा for sure. You have to swap all the corresponding elements, and then again jump by 2. You will come to 4. But when you came to 4, you saw that rows plus 1, that is 5, does not exist, right? 5 exist करता है क्या? नहीं. So for that purpose, we will just leave it as it is. अगर ऐसे केस है कि rows plus 1 exist नहीं कर रहे हैं, तो leave as it is. Okay. Do you want me to discuss the code also? Yes. Who just Abhishek, can you push the code in discussion? Is he here? Yes ma'am. हाँ, discussion में post कर दो code को. Yes ma'am. Let him post, then I'll discuss the code also. Okay. मैम चेक वाला भी क्या? मैम चेक नहीं वाला भी करा देना ट्राई रन. कौन सा चेक वाला अनिकेत? रो प्लस 1 वाला आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? ओके, डन. Check M matrix. I have already done this question. Were you not present in that class? यही क्वेश्चन में किया ना अभिषेक डिस्कशन में? हाँ, नहीं मैम, कॉन्टेस्ट 10 है, कॉन्टेस्ट 9 में है. कॉन्टेस्ट 10 है. कॉन्टेस्ट 10 है, मैंने
मैंने दूसरी लिंक से भेजा था। ओके कोई बात नहीं, पता नहीं उन्होंने कहाँ पे कोड पेस्ट किया, मुझे समझ मैम, नहीं आ रहा। कॉन्टेस्ट 9 में है, कॉन्टेस्ट 9 में। अच्छा मैम, कॉन्टेस्ट 10 है क्या? लिंक भेजिए। कॉन्टेस्ट 10 है ये। ओके ओके ओके, कॉन्टेस्ट 9 की लिंक भेजना मुझे कोई। तो वही 10 की जगह 9 कर दीजिए ना वहाँ पे, गीकस्टर के बाजू में, कॉन्टेस्ट के बाजू में वो अच्छा स्लैश है अच्छा, ना, हाँ वहाँ पे 9 कर दीजिए सर। अभी दूसरे बैच का है क्वेश्चन। एक मिनट वेट, I think I have the contest 9 link. Can someone please share me contest 9 link? ये नहीं खुल रहा है इससे। Okay. ये कॉन्टेस्ट 9 इसी वीक का था ना, तो कॉन्टेस्ट 10 आप कैसे एक्सेस कर लिए? ओके एनीवेज, ओके whosoever asked me this, अच्छा दूसरे बैच का था, ठीक है, तभी मैं सोची वो कॉन्टेस्ट 10 कैसे एक्सेस हो गया। So let's see the code, although it's with startled, but no problem. First of all, we are taking inputs and also we are calling this function print odd even and passing this matrix. Okay. Next, what we are doing is in this function, first of all, we are running a loop from row equals to 0 to how many rows exist, like row is lesser than n. For loop. पूरा कोड भी नहीं पुश किया, आई थिंक। Okay, it's faulty code. It will be row equals to 0, row is lesser than number of rows. Okay, that is basically matrix dot length. Then row plus equals to 2. Why plus equals to 2? Because we are taking 2 jumps. Are you understanding, Sagar? Sagar? नहीं मैम, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है सर, लेट मी, अच्छा ये लिखा था मैंने, देखो इनिशियली हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारी मैट्रिक्स थी उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर गोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0th रो, राइट? तो 0th रो से जितने भी टोटल रोज हैं वहां तक की लूप वी जस्ट रीड, रो इज लेसर देन m. Then we have to keep a check whether row plus 1 exists or not. Tell me, how will you check whether row plus 1 exists or not? If it is lesser than m, which is basically the total number of rows present, m जो है वो क्या है, total number of rows present. Okay, total rows. Now you will, if it exists, then what you need to do is you need to go through all the column values and swap what the matrix of row column value, like in the matrix the column and row value at which you are present, you need to swap it with the row plus 1 column value. मतलब same column value next row के. Are you understanding this? I already discussed it with example. Tell me, Sagar, are you understanding? नहीं समझ आ रहा है तो बोल दो, I'll what I'm saying is स्वैप वाला फंक्शन बनाया क्या यहाँ से? स्वैप वो मैंने ऐसे रफली लिख दिया, आपको वो खुद बनाना पड़ेगा. आई होप यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट स्वैप फंक्शन. डू यू नो हाउ टू स्वैप टू वैल्यूज? यस मैम. हाँ तो एग्जैक्टली वही किया है यहाँ पे. और एक बार पोस्ट किया है, फंक्शन टाइप से लिखा हुआ है ना? अच्छा फंक्शन टाइप से लिखा गया, आप यहाँ पे सीधे भी वो कोड लिख सकते हो स्वैप करने का, फंक्शन ना बनाकर सीधे int temp equals to whatever करके आप स्वैप वैल्यूज को कर सकते हो. Now let's discuss the logic. Logic already discussed कर लिया, but again what we're doing is
go to a particular row column value and if its row plus 1 exist, मतलब उसका next row exist करता है, तो swap the value present at next row in the same column. So in the same column and in the next row, which value is present? 6 is present. So you have to swap 1 and 6 together. Are you getting? So for that purpose, we have added this. Now, since we have already done this for 0, the next row which I have to check will be the next even row. Okay, next even rows we have to swap only. So just increment your row value by 2. That is the logic. Row plus equals to 2. Okay. Is it clear now? Or do you want me to discuss more? 2 and 3. 2 and 3. और अगली तो रो रहेगी ना 2 and 3 0 1 हो गया, उसके बाद में 2 and 3 का स्क्वायर वन रहेगा ना आपस में। 0 1 तो रो नंबर्स है, रो नंबर्स हैं और ये सारी वैल्यूज है। 0th रो पे ये सारी कॉलम वैल्यूज हैं और 1 पे ये सारी कॉलम वैल्यूज हैं। तो 2 और 3 नहीं स्वैप होंगे, 2 और 7 स्वैप होंगे। व्हाई? बिकॉज वी आर स्वैपिंग रोज बोल रहा हूं। हाँ 2 and 3। हाँ, अगर 2 3 एग्जिस्ट कर रहा होगा तो 2 3 विल गेट स्वैप्ड, देन इफ 4 एग्जिस्ट 4 5 विल गेट स्वैप्ड एंड सो ऑन। Okay. Yes. Thank you. Okay, some people had more doubts. It's 7:28. Aniket, you asked me check if M-shaped matrix or not. So question is clear ki nahi? Question is clear or not? Tell me. Question says that if along the M shape you are facing once, then only once, and at all rest all places there are zeros, then it is a valid M matrix. Otherwise not. If anywhere in this M shape, informing M shape, anywhere you are like encountering a 0, then that's not a this M shaped matrix. And similarly, if somewhere among these zeros, rest of the positions where M is not lying, there you are facing 1, then also it is not a valid matrix. Okay. I hope the question is clear. Let's quickly understand the code. So what I'm doing is, first of all, iterating through all the row column values. While iterating, we are able to find out that M-shaped kaise banega. If column equals to 0, if column equals to n minus 1, where n is the number of rows, number of columns, right? M shape kaise banega, and half left diagonal and half right diagonal. That will these things together will form M shape. So just you need to keep a check for these. And if anywhere there's violation that along M shape you are able to find a 0. If along column equals to 0 or column equals to n minus 1, and these are the relations that exist between row and column value. And for this, you need to ensure one thing, that row is lesser than equals to n by 2. Why we are doing so? Because we don't have to check for the entire diagonal. We just have to check till half of the rows, right? For M shape, we just have to check till half of the rows. For that purpose, I have added this. Okay. And then what we are doing is, if our condition is violated, that is, if matrix of row column value in the M shape, if I'm facing a 0, then straight away return false from there. Okay. If we are in a position that is not lying in M's range, in that case, if I'm facing violation, in that case, how will I face violation? If anywhere in rest of the places, I'm able to find 1, anywhere I'm able to find 1, that is a violation. So I can straight away return false from there, right? Yes. Okay. And if it is not so, if anywhere we have just looped over all the row column values and we haven't returned false, it means you need to return true. That is a valid M-shaped matrix. Okay. Is it clear, Aniket? If still you have doubt, please discuss in post session. Hello, Anika. Hello. Yes. Hi, ma'am. मैम मेरा एक डाउट है। मैंने अभी एक मतलब एग्जाम दिया था तो उसमें एक एरे आया था
तो एरे को मतलब ऐसा ऐसा करना था कि एक एरे इनपुट करना था और उसका दूसरा एरे जनरेट करना था कि मतलब जो एलिमेंट है ना उसका इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंटों का मतलब प्रोडक्ट बन रहना चाहिए उसी इंडेक्स पे। हाँ ठीक है, आप पोस्टर सेशन में पूछ लीजिएगा कब रहता है बूस्टर सेशन में? 9:30 पे। अच्छा अच्छा। Okay, so am I audible? Good evening, good evening. ठीक है. I will not be able to speak louder today because I am having a little fever and also cold and cough. So majorly we have one problem for today, which we have to practice, which is matrix multiplication. Matrix multiplication. Okay. If I ask you, in order to add two matrices, what we have to do? In order to add two matrices, what dimension should be there? It is not square matrix. No, it is not square matrix. In order to add two matrices, the dimensions of those two matrices should be same. It is not necessarily that the matrices will be same. For example, if I am making two matrices, if I am taking a first matrix, first I am discussing for addition, then I will be discussing for multiplication. Have you already done addition? Yes or no? Yes. So if I am saying the first matrix is 3 rows and 4 columns, so 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. And the second matrix is, let's suppose it is maybe 5, 15, 25, maybe 7, 17, 27, or let's not take 7. Let's take 8, 18, 28. Then there is, you can say 36, 26, and 6. Then there is maybe, let's say 40, 10, 30. This is the second matrix.
So can I multiply these two matrices? Yes or no? Can I multiply these two matrices? Sorry, not multiply, but can I add to these two matrices? Add these matrices. Currently, I'm not discussing about multiplication, but I am discussing about addition. Can I do matrix addition of same dimension matrix? Yes. First matrix is also 4 cross 3. Second matrix is also 4 cross 3. First matrix have 4 rows, 3 columns. Second matrix also have 4 rows, 3 columns. So both the matrices have same number of rows, same number of columns. So matrix addition is possible at least. At least we can say addition of these two matrices is possible. And what will be the result of addition? Does anyone know what will be the result of addition? Like what will be the dimension of resultant? Dimension of resultant matrix? I guess we have already done this. It will also be same. It will also be same. It will also be 4 cross 3 only. 4 rows, 3 columns. And the answers will be, here it will be 10 plus 5. At 0, 0, it will be matrix of 0, 0 plus matrix 2 of 0, 0. So 10 plus 5. Matrix of 0, 1 plus matrix 2 of 0, 1. That is 20 plus 15. 20 plus 15. Then 30 plus 25. 30 plus 25. Then there is 40 plus 8. So in next cell, it will be 40 plus 8. 50 plus 18. 50 plus 18. 60 plus 28. 60 plus 28. 70 plus 36. And so on. 80 plus 26. Not 26, but 36. 80 plus 26. And finally 90 plus 6. And in the last row, we can say 100 plus 40. Then 110 plus 10. 110 plus 10. And finally 120 plus 30. 120 plus 30. Is this the what the resultant of two matrices getting added is? Yes. Two matrices of 4 rows, 3 columns. When they add, they will also form the matrix which is 4 rows, 3 columns. And we can say the dimensions of resultant will be also be 4 cross 3. And the resultant will be simply just add the corresponding cells. Add 0, 0 of both the matrices. Add 0, 1 of both the matrices. Add 0, 2 of both the matrices. 1, 0, 2, 0, 3, 0, whatever. Add the corresponding cell of both the matrices and store in the same cell. 0, 0 will store matrix 1 of 0, 0 plus matrix 2 of 0, 0. The cell which is 2, 1, 2, 1, this cell, it will store 2, 1 of first matrix plus 2, 1 of second matrix. Is it clear how addition is performed? How addition is performed? Yes. So can I say, if this is mat 1, if this is mat 2, and if this is resultant, can I say mat 1 of rows will be same as mat 2 of rows will be same as mat resultant of rows? Resultant of rows, that is rows in all the 3 matrices will be same. Similarly, the number of columns in mat 1 is equals to number of columns in mat 2 is equals to number of columns in the resultant. Yes. Are these the two relations? It is not necessarily that the matrix will be square. We can add two rectangle matrix also. That is number of rows and number of columns need not be equal. And it is also not true for multiplication also. Matrices can be rectangle matrices. It need not be square. Like if it is square, then when and good, but you can add two matrices even if they are not square. 4, 3, 4, 3, 4, 3. Is it first addition clear? Yes. Instead of addition also, you can also do subtraction. Like subtraction is same, just instead of plus symbol, use the minus symbol. So that is also same, exactly same. But when it comes to division is not possible for matrices. You cannot divide a matrix with a matrix. Matrix division is not possible. You cannot divide MAT1 divided by MAT2. Never possible. But multiplication is possible, but it is not that simple. Multiplication is possible, but it is not that simple. So you have to listen me very carefully. Okay. So first thing, does everyone know? Like, does anyone know? Not everyone, but does anyone know what is the condition for two matrices to get multiplied? Like, what should be the constraint? Only when we can multiply two matrices. Let me write it again. Like, let me write it in terms of R1, R2, R3. If this is, you can say R1 cross C1, number of rows in first matrix, number of columns in first matrix, 3.
Number of rows in second matrix R2. Number of columns in second matrix C2. Number of rows in resultant, which is R3, and number of columns in resultant, which is C3. So I can say the resultant will be like the constraint will be, or addition, the constraint will be, which color is not used. So let me take yellow. So constraint will be R1 is equals to R2 is equals to R3. And similarly for addition, I am talking currently for addition. And C1 is equals to C2 is equals to C3. This is for addition. Columns in all and rows in all the matrices, all the three matrices should be same. But when it comes to multiplication, it is not like that. It is not like simply add the two corresponding cells. It is not like that. Is my like voice coming properly, or is it pretty low to understand? It is pretty low to hear. आ रही है ये बात, ये बहुत ही कम आ रही है. ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. So what I am saying, we will have two matrices. We will have two matrices. First matrix will have some dimensions. Second matrix will have some dimensions. So let me make the first matrix. So first matrix, or let me make a proper matrix, like proper, you can say rows and columns. Grid, I am making a grid. Okay. So if this is the first matrix, if the first matrix is MAT1 is, we can say 4 rows, 3 columns, then what should be the second matrix so that I can multiply those two matrices? What should be the dimensions of second matrix so that I can multiply those matrices? It can be 3 into anything. It can be, it is not necessarily 3 into 4. It can be 3 into anything. That is for the second matrix. Number of rows should be 3. If the first matrix have number of columns as 3, second matrix should have the number of rows as 3. So let me just make the second matrix. So let me copy this. For the second matrix, in order to multiply these two matrices, number of columns in the second matrix should be 3. Sorry, number of columns in the second matrix should be, wait, this is 4 rows, 3 columns. Number of rows in the second matrix should be 3. Number of rows in the second matrix should be 3. So I am making a matrix where the number of rows are 3. So there are 3 rows. There is no constraint on column. There can be any number of columns. There can be 1 column, there can be 2 columns, there can be 3 columns, 4 columns, 5 columns. Number of columns, we do not have any constraint. So currently what I am doing, I am making the number of columns as, let's suppose, 4. Like I am making number of columns as 4, but it is not necessarily number of columns will be 4. It can be anything. It can be anything. So currently I'm making the number of columns as 4, but it is not necessary. It is not like first matrix will be 4, 3, next matrix will be 3, 4. It can be 3, anything. It can be 3, anything. It can be 3, 1, 2, 3, 4, and anything. But currently, just for simplification, just for simplicity, I'm taking as 3, 4. Now, if this is the first matrix, I can multiply this matrix with the first matrix. If I am taking, let's suppose 5 columns. If I am taking, let's suppose 5 columns. Or maybe in the first matrix, instead of 4 rows, if I am taking 5 rows, let's define 5 rows. So in the first matrix, let's have 5 rows. Okay, so first matrix is not 4, 3, it is now 5 cross 3. Now my question to you is, if I can multiply matrix 1 with matrix 2, yes or no? Can I multiply matrix 1 with matrix 2? 5, 3, can it be multiplied with 3, 4? Answer is yes. Why? You only have to compare what? You only have to compare the columns of first with the rows of second. Only this should be same. Columns of first should be same as rows of second. Otherwise, it is not possible. So if I am taking just the opposite, that is, if I am taking this as the first matrix, 3, 4 as the first matrix, and if I multiply this with this one, that is 5, 3. So can second matrix become first matrix?
If I am taking second matrix as first matrix, what will happen? What will happen? I will say first matrix will be 3 cross 4. Second matrix will be 5 cross 3. It will be 5 cross 3. Is the number of columns in first matrix, is it equal to number of rows in second matrix? Obviously, no. No. So it is not possible. Like if A into B is possible, it is not necessary. It is not necessary B into A will be always possible. Currently, for 5 cross 3 and 3 cross 4, A into B is possible because columns in first is the same as rows in second. But the B into A, that is second matrix into first matrix, it is not possible. Why? Because number of columns in second is not equals to number of rows in first. So A into B is only possible. So you can say it is not always possible that if A into B is possible, always converse will also be possible. In addition, you can always say it. If A plus B is possible, obviously B plus A is possible. Why? Because like if both the dimensions are same, you can just swap the matrices. You can take the second matrix first. But here it is not always possible that you will always be able to multiply. If you are able to multiply A into B, you will be able to multiply B into A. It is not always possible. So first point, in order to multiply two matrices, what is the constraint? What is the constraint? If I want to multiply A R1 cross C1 with B R2 cross C2, what is the constraint? If I'm saying this is A and this is B. Columns in the first matrix, that is C1, should be equals to rows in the second matrix, that is R2. C1 should be equals to R2. Columns in first should be equals to rows in second. And now if I can say dimensions, like if the dimensions match, if matrix multiplication is possible, what will be the resultant dimension? What will be the resultant dimension? See, it will be easy for those who actually have done already this in 11th class. Like this is a topic of 11th class mathematics. There was a topic matrices and determinants. There, some of you might have learned about all of this, whatever I am teaching currently. So what will be the dimensions of the resultant? No problem, humanities 3. मैं पढ़ाता रहा हूँ, शुरू से पढ़ा रहा हूँ. See, resultant will be whatever dimension is common, cancel out that. Like A will have R1 cross R2, R1 cross C1. B will have R2 cross C2. So since C1 is the same as R2, cancel out this. The resultant will be 5 cross 4. Resultant will be R1 cross C2. It will be 5 cross 4. So what I am writing for resultant, if the multiplication is possible, resultant will be 5 cross 4, or you can say it will be R1 cross C2. R1 cross C2. Rows in first into columns in second. Cancel out the common term, cancel out the common dimension, and remaining two dimensions will be the resultant. It will be the resultant. Is it clear? Is it clear? Now how to multiply? Like this part was very tough, and also multiplication is even more tough, and the code is even more tough. So this question is like very advanced, not very much advanced, but you can say this is hard question. If the most hard question of matrix will come, it will be exit point, it will be question like n-queen, it will be question like you can say spiral rotate or spiral traversal, or it will be matrix multiplication. It will be one of these questions. So resultant, as I said, it will be 5 cross 4. So I am making 5 rows, 4 columns. Or let me make some like less number of rows. Otherwise, it will become very difficult. So if the first dimension is 5 cross 3, second is 3 cross 4. Okay, no problem. Let me just make this dimension, but I will be taking some other example. Otherwise, we will be filling this for 14 years, and the entire entire exile will end. पूरे 14 साल के वनवास निकल जाएंगे, लेकिन ये भरी नहीं जाएगी, इतना बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन. I am just making this dimension in front of you. If you want to multiply A into B, A will be 5 cross 3, B will be 3 cross 4, resultant will be 5 cross 4. This will be 5 rows, 4 columns. I am not currently showing you how to multiply this because it will become very, very large.
I will be showing you for a simpler example. Should I show you for a simpler example? Okay. Okay. So let us take, in the first matrix, let us take 3 rows and 2 columns, or maybe 3 rows and 3 columns. In the first matrix, it is 3 rows, 3 columns. It is not necessarily square, as I showed in the previous example. It was not a square matrix. Any matrix was not a square matrix. But for simplicity, I am taking the first matrix as square, and I am taking the second matrix as 3 cross 4. The second matrix I am taking 3 cross 4. That is 3 rows, 4 columns. It is 3 rows, 4 columns. Or let us take this as 4 rows. And this will be 3 rows, 3 columns only. Is it clear? Can I multiply these 2 matrices? Yes or no? Can I multiply these 2 matrices? Is it possible? Can I multiply 4 cross 3 with the 3 cross 3? 4 cross 3 with the 3 cross 3? Yes. So let us take some values. Let us take some values. In first matrix, if it is 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, or let us take 1, 0, 1, 1, then 1, 2, then 2, 0, 2, 1, 2, 2, then 3, 0, 3, 1, 3, 2. In the second matrix, let us take maybe what? Let us take 40, 41, 42, 50, 51, 52, then 60, 61, 62. This is the second matrix. So how will the resultant become? How will the resultant become? Does anyone have any idea how we multiply 2 matrices? Anyone have any idea? What will be the dimensions? First tell me, what will be the dimensions? It will be 4 cross 3 only. Take the rows in first, take the columns in second. Cancel out the common term. So rows in first into columns of second, that is 4 cross 3 again. It will also be 4 cross 3. It will also be 4 cross 3. So 4 rows, 3 columns. Okay, so this is the resultant. This is C, which is 4 cross 3, which is R1 cross C2. This is R1 cross C1. This is R2 cross C2. Now, what will be the 0th block? What will be the 0th block? It will not be simply 0, 1 into 4, 0. First thing is this. It will be, listen very carefully, it will be 0th block, 0, 0, like C0, R0. Let me write the columns and rows. R0, R1, R2, R3, C0, C1, C2. Okay, so it is R0, C0, 0th row, 0th column. The row will be taken for the first matrix. Column will be taken for the second matrix. That is, multiply this row with this row or this column. Multiply 0th row of first matrix with the 0th column of second matrix. So how we multiply? We say 0, 1 into 4, 0 plus 0, 2 into 5, 0 plus 0, 3 into 6, 0. So what we are doing? We are saying if we need to multiply R0 with the C0, R0 will be for the first matrix. C0 will be for the second matrix. That is, multiply the 0th row of first with the 0th column of second. So it will become 0, 1. Let me write with green, or not green, but white only. Or let's say blue only. So 0, 1 into 4, 0. And let us make this smaller. Let us make this also smaller. We need some space. Okay, so this is the resultant. Let me make it larger.
So this is the resultant. Okay. So we are multiplying these two matrices. So what I am saying multiply 0th row of first matrix with the 0th column of second matrix. 0, 1 into 4, 0 plus 0, 2 into 5, 0. 0, 2 into 5, 0 plus 0, 3 into 6, 0. So I am writing that also. So 0, 1 into 4, 0 into 4, 0. 0, 2 into 5, 0. 0, 2, 0, 3 into 6, 0. Into, and in between all these, you have to add. You have to add these. 0, 1 into 4, 0 plus 0, 2 into 5, 0 plus 0, 3 into 6, 0. Is it clear how the first cell is actually getting calculated? This is just for only 0, 0. This is just only for 0, 0. You are running a loop on R0 and also you are simultaneously at the same time you are running the loop on 0th column. Now, if I am saying I am running a loop on rows on first and also I am running a loop on columns on second. So am I sure the rows in the first is same as columns in the second? Sorry, the number of columns in the first is the same as number of rows in the second matrix. Number of columns in the first matrix, it is same as number of rows in the second matrix. It has 3 columns, it has 3 rows. So is it same, like the loop will run same number of times? Yes, that is what nothing but the constraint. Constraint should be columns in first matrix should be same as row in the second matrix. Column in first matrix should be same as row in second matrix. So columns, number of columns in the first matrix should be same as number of rows in the second matrix. That is what we are saying. The first loop on rows on the first matrix will be taking the same number of times. For what? For the loop on the columns on the second matrix. So we can combine those two loops. We will be discussing the code, but let us fill all the values. Now for R0C1, what we are going to do for R0C1? For R0C1, in order to fill R0C1, which row of which matrix are we going to take and which column of which matrix are we going to take? If I want to fill R0C1, I am going to take R0 of the first matrix and C1 of the second matrix. Row will be taken from first, column will be taken from second. That is, R0 will be multiplied with C1. R0 will be multiplied with C1. So 0, 1 into 4, 1 plus 0, 2 into 5, 1 plus 0, 3 into 6, 1. So this is what we are going to do. 0, 1 into 4, 1 plus 0, 2 into 5, 1 plus 0, 2 into 6, 1. It will be addition in between the addition. Is it clear? R0C1, how is it getting filled? R0C1, multiply each term and add the corresponding multiplication. Now you have to tell what will happen for R0C2, which row of which matrix and which column of which matrix. Row we take from which matrix, first or second? We take row from first matrix. So from first matrix, we will take R0. From second matrix, we will take C2 and multiply. That is 0, 1 into 4, 2 plus 0, 2 into 5, 2 plus 0, 3 into 6, 2. This is how we are going to do multiplication. So what we are going to say, 0, 1 into 4, 2, 5, 2, 6, 2. 0, 1 into 4, 2, 0, 2 into 5, 2, 0, 2, 0, 3 into 6, 2. So let me write all the terms. So 0, 1 into 4, 2, 0, 2 into 5, 2, and 0, 3 into 6, 2. And in between all these terms, you have to add 0, 1 into 4, 2 plus 0, 2 into 5, 2 plus 0, 3 into 6, 2. Is it clear? Is it clear? Now you have to tell me, those who want to tell me the answer for R1, C0, they can unmute and they can answer. I have allowed everyone to unmute. What will be the resultant of R1, C0? Hello. Yes. So it will be 10 into 40 10 into 40 plus 11 into 50 11 into 50 plus 12 into 60. Very good. That is R1 of first matrix with C0 of second matrix. That is 10 into 40
plus 11 into 50 plus 12 into 60. So 10 into 40 plus 11 into 50 plus 12 into 60. This is what we are going to do. And in between, what we are going to do, what we are going to say, in between these multiply, and in between the multiplication have addition. That is 10 into 40. Sorry, yeah, 10 into 40 plus 11 into 50 plus 12 into 60. Is it clear? Now, can anyone tell me for R1C1? For R1C1? What will happen for R1C1? R1C1. Sir, 10 into 41. R1, that is first row of the first matrix. 10 into something plus 11 into something plus 12 into something. And what is that something? 41. 51, 11, 61. Column 41, 51, 61. 41, Yes. 61. Is it clear? Yes. Now, similarly, for, and I took different colors. Don't worry, like colors does not matter. Concept matters. Now for R1, C2, what will happen? 10 into 42 10 11 into into 42 52 plus and 12 into 62 11 into 52 and plus 12 into 62. Yes. So 10 into something plus 11 into something plus 12 into something. And what is that something? First, let me write multiplication. And that something is nothing but 42, 52, 62. 42, 52, 62. See, for all of these, 42, 56, 42, 52, 62, 42, 52, 62. For all of these, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Why? Because row is from first matrix, so 0, 1, 0, 2, 0, 3. Column is for second matrix, so 42, 52, 62, 42, 52, 62. So that is what we are going to do. Now, similarly, now quickly, can you tell me for R2, C0? 20 into 41. 20 into 41. 41. 21. 20 into 40, sir. 40, sir. 20 to 40. 20 into 40 plus And 21. 21 into 50 and 22 into 60. So let me write all the multiplications and additions, all the multiplications and additions, multiplications, additions, multiplications, additions, and finally here also. So here it will be like for all of these, will it be same 20, 21, 22, yes or no? R2, 20, Yes, 20, sir. R2, 22, 22, 20, 21, 22. For all of these, it will be R3, which is 30, 31, 32, yes or no? Yes. 30, 31, 32, 30, 31, 32. Now, for C0, what it will be? C0. 40, These 50, 60, 40, 50, 60. 40, 50, 60. 40, 50, 60. 40, 50, 60. For C1, that is for this cell, and similarly for these two cells. 41, 51, 61. For this also, 41, 51, 60. 60. Finally, for last two cells, that is C2. 42, 52, 62. 42, 52, 62. Similarly here, 42, 52, 62. 62. Like I have not done this intentionally. This is by mistake. Like green is same as yellow. By mistake, I have taken green. You can change it to yellow. Is it clear? How we are multiplying two matrices? Is it clear, everyone? Okay. Okay. So this is resultant, and resultant is 4 cross 3, which is R1 cross C2. Now, first thing, in order to fill all the cells, like first should we loop on the resultant, yes or no? First should we loop on resultant? Fill this cell, fill this cell, fill this cell, fill this cell, fill the resultant, fill the resultant, fill the resultant, yes or no? We should run a loop on all the resultant cells. Yes or no? Code में नहीं, code बहुत ही simple होगा. Code will be cleaner than whatever we have done here. Only the logic is difficult. First, outer two loops will be for resultant row, resultant column. Fix the resultant row, fix the resultant column. So how much number of rows resultant has, how much number of columns resultant has? Or let us first write this much. Like let us first write till now that print -1 is matrix is not possible if matrix multiplication is not possible. So let us write till this point and then we will discuss about multiplication. So what we have to do,
there will be rows and column of first matrix, rows and column of second matrix. Then we have to multiply those two matrices. If multiplication is possible, print the resultant matrix. If it is not possible to multiply those two matrices, print -1. And you have to take the order. You have to maintain the order. That this should be the first matrix, this should be the second matrix always. So let's first like input the matrices. So scanner scn is equal to new scanner system.in. So int r1, that is rows of first matrix. Int c1, that is columns of first matrix. Then let's take the first matrix, which is r1 cross c1. Now let's take all the inputs of the first matrix. Row will run till r1 and row plus plus. Column will run till c1 and column plus plus. Okay, and we will take the first matrix. Let's take it m1. So we will take the m1 of row comma column as scn.nextInt. Now similarly, second matrix, should we again take R and C, yes or no? Again take according to the input rows and columns of second matrix, R2, C2. And now we will take the input of second matrix. Input of second matrix, M2 is equal to new into R2, comma C2. So let us copy this. Instead of running a loop till R1, comma C1, we will run a loop till R2, comma C2. Instead of filling it in M1, we will fill it in M2. Now, whatever matrix multiplication we have to do, we will do it in a separate function. We will pass the first matrix M1 and we will pass the second matrix M2. Okay, you can return the matrix or you can like simply say just print there only. So if I am just printing there only, what will be the return type? What will be the return type? It will be void. It will be void. So matrix multiplication. And trust me, code will be very short. The code will be cleaner. It is not messy like the dry run. Dry run was more messier, but the code will be very much clean. First, tell me when is the matrix multiplication not possible? First, let us like figure out all the values. R1 is m1 dot row, m1 dot length. R2 is, sorry, C1 is m1 of 0 dot length, m1 of 0 dot length. R2 is m2 dot length and C2 is m2 of 0 dot length. Is it clear? Why I'm taking R1 like this, R2 like this, C1 like this, C2 like this? Otherwise, I have to pass all these. सर ये समझा नहीं, क्या नहीं समझा? ये चीज, ये दोनों लाइनें कार्तिक देखो, what I am saying, M1 has a number of rows as R1. So how we can figure out the number of rows from a matrix? Matrix dot length, number of rows is nothing but number of the size of the array of references. If you have attended the array of references, the memory mapping class, so array of references will have the rows number of length and columns will be one particular row, one particular array of that row. So like general syntax, you have to remember, you have to cram is when we figure out length in terms of rows, it will be matrix dot length. When we figure out columns from matrix, it will be matrix of 0 dot length. This is the syntax, you have to cram this. And the concept comes from the array of references, that is from jagged array. So R1 will be number of rows in first matrix, so M1 dot length. C1 will be number of columns in first matrix, that is M1 of 0 dot length. Similarly, for second matrix, rows will be M2 dot length, size of the array of references of second matrix, and columns will be M2 of 0 dot length. Is it clear somewhat, Karthik? But like most probably it will be clear only if you have attended the jagged array concept. For now, you can cram this. Okay. Now, what is the condition when matrix multiplication is not possible? Not possible. Matrix multiplication कब possible थी? C1 should be equals to R2.
C1 should be equals to R2. Number of columns in second matrix should be same as number of rows in second matrix. Sorry, C1, that is number of columns in first, should be same as R2, number of rows in second. So if C1 is not equals to R2, if it is not equals to R2, then it is not possible. So system.out.println -1, matrix multiplication not possible. Matrix multiplication not possible. And we can simply return. If it is not possible, you cannot multiply. So return. Otherwise, apply the logic. Is it clear till now? Okay. Now, what is the dimension of resultant? What is the dimension of resultant M3? How many number of rows resultant have? How many number of columns resultant have? As I said, when I discussed 5 cross 3, 3 cross 4. So whatever is the common part, ignore that, remove that. This cancel out with this one, you can assume. Whatever is remaining, R1, C2. So R1 cross C2, 5 cross 4, R1 cross C2. Resultant will be R1 cross C2. Clear? Sir, can you recap before 2 minutes? Sir, can you recap before 2 minutes? ये क्या मतलब हुआ? मतलब अनम्यूट करके बोल दो यार, क्या नहीं समझ आया सौरभ? सर अभी का बता दी 2 मिनट पहले क्योंकि मेरा वॉइस अच्छा, वॉइस कट रही थी शायद से, मेरे को आपकी कटी हुई आवाज आ रही है, लेकिन कोई नहीं, दोबारा बता देता हूँ. Matrix multiplication is only possible. It is only possible if number of columns in first matrix, if it is equals to number of rows in second matrix. That is, C1 should be equals to R2. If C1 is not equals to R2, it is not possible. C1 should be equals to R2. So what I am saying, if C1 is not equals to R2, number of columns in first is not same as number of rows in second. So matrix multiplication is not possible. And according to the question, what they are asking, they are saying print -1 if multiplication is not possible. So that is print -1 and return. Like no need to do multiplication, no need to multiply, no need to form the resultant. Simply return from this function. Return from this function, not return from program. If we return from main function, we return from program. We terminate the program. But we return from a matrix multiplication function, it means return from this program. Return from this function. Return from matrix multiplication. That is, do not execute the remaining code. Is it clear? Okay. Now listen very carefully. In order to fill the resultant, first should I loop on resultant? Yes or no? Fill R0 C0, fill R0 C1, fill R0 C2, fill this cell R1 C2 C0, fill R1 C1, fill R1 C2, and so on. First, should I loop on all the resultant elements? Yes. And loop on resultant will be 2 loops, like one loop on resultant row, one loop will be resultant column. So how many resultant rows are there? How many resultant rows are there? How many resultant rows are there? How many resultant columns are there? It is R1 cross C2. R1 cross C2. Cancel the common term. Take the row of first, take the column of second. 4 cross 3. R1 cross C2. So row will be till R1, column will be till C2. You can also take like M3 dot length and M3 of 0 dot length. It is also possible because it is same. Like R1 is equals to M3 dot length. C2 is equals to M3 of 0 dot length. R1 is the number of rows in M3. R2 is the number of columns in M3. So you can take R1 C2, you can take M3 dot length, M3 of 0 dot length. It is your wish. But I generally take R1 C2. Now, like, can you figure out any cell by simply calculating 01 into 40? Can you simply calculate it using constant operation in order to calculate any value? Like till now, what we have done? Till now, we have run a loop for all the cells. We have run a loop for calculating this cell value, this cell value, this cell value. We are running a loop in order to calculate each cell's value. But in order to calculate each cell value, do we also require a loop? Yes or no? Do we also require a loop? Yes.
But important point is how many loops we require. In order to calculate one cell, ignore the remaining cells. Ignore the remaining cells. In order to calculate one cell value, that is 0, 1 into 40 plus 0, 2 into 50 plus 0, 3 into 60, how many loops we require? Those who will be able to answer me, they are like, you can say, pretty good till now. And please answer me in personal chat. Please answer me in personal chat. Please answer me in personal chat. चॉकलेट दे दूंगा, चॉकलेट ले लेना. चॉकलेट का इमोजी ढूंढना पड़ेगा पहले, फिर दे पाऊंगा. See what I am saying. I have already taken these two loops. Do not count these two loops. These are already done. That is, we have run a loop on each cell of the resultant. Now picking one cell. Now how many loops we require? That is inside these two loops. Inside these two loops, how many loops we require? ये दोनों लूप्स को काउंट मत करना, ये दोनों तो हो चुके हैं. ये किस लिए थे? ये दोनों लूप्स तो रिजल्टेंट के ऊपर, हर सेल के ऊपर लूप लगाने के लिए थे कि R0 C0 वाला सेल को कैलकुलेट कर लो, इस वाले सेल की वैल्यू कैलकुलेट करो, इस वाले सेल की वैल्यू कैलकुलेट करो. रिजल्टेंट के सारे सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रिजल्टेंट के सारे सेल्स के ऊपर जा रहे हैं, सारे रो सारे कॉलम के ऊपर जा रहे हैं. वो हो चुका है. उसके बाद बताओ, उसके बाद फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली 3 लूप्स दिख रहे हैं क्या? Like, are you saying 3 loops? Inside 2 loops, there are 3 more loops. That is total 5 loops. Total 5 लूप होंगे. एक सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 3 लूप लग रहे हैं. In order to calculate 0, 1 into 40 plus 0, 2 into 50 plus 0 into 3 into 60. I am not saying calculate the number of iterations. मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लूप कितनी बार चल रहा है. मैं ये बोल रहा हूँ कितने लूप रिक्वायर्ड है, कितने नेस्टेड लूप रिक्वायर्ड है. ऑब्वियसली लूप तो 3 बार चल रहा है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन कितने लूप्स रिक्वायर है मैं ये पूछ रहा हूँ. हाउ मेनी लूप्स आर रिक्वायर्ड? 1 loop, 2 loop, 3 loop, how many loops? Very good, very good. So I don't have these many chocolates, so I will be sharing one emoji of chocolate in the everyone chat. We have to only take 1 loop. Why? Because we can simultaneously multiply this with this. We can simultaneously multiply this with this if we want to calculate R2, C1, let's suppose. So what we can do? Run a loop on R2, run a loop on R2, simultaneously run a loop on C1. Like, these 2 loops will not be different. It will be not nested. Do we have to do like this? 20 into 41 plus 20 into 51 plus 20 into 61 plus 21 into 41 plus 21 into 51 plus 21 into 61. Similarly, plus 22 into 41 plus 22 into 51 plus 22 into 61. Do we have to do like this? मतलब इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो. तो ये करना है क्या हमें? Should we do like this? Do we have to do like this? No. अगर ये करना होता तो 2 loops लगते हैं. भाई, fix this, run a loop, fix this, run a loop, fix this, run a loop. Then we would have required 2 loops. But we are not fixing anything. We are saying change this also. Change this also, run a loop on this also, run a loop on this also simultaneously, same. So 20 into 41, shift this also, 21, 51, shift this also, 22, 61. Now, what I am saying, in order to calculate any cell, since we are requiring 1 loop for this, that is 1 loop for the first row and 1 loop for the second matrix column, we only require 1 loop because both can be changed simultaneously. But the main question is, for the first row, what will remain fixed? Like for the first matrix, what will remain fixed? If I am saying I want to calculate R2, C1, if I want to calculate R2, C1 for first matrix, what will remain same? Row will remain same. Very good. Row will be R2, row will be R2, row will be R2. For second matrix, what will remain same? What will remain same? Second matrix, the column will remain same, that is C1. So take the cells row as the first matrix row, take the cells column as the second matrix column. And what should change for first matrix and second matrix? This is same. For first matrix, column should change. For second matrix, row should change. But simultaneously मतलब लगातार, same, साथ के साथ चलेंगे.
ये भी साथ साथ चलेगा, ये भी साथ साथ चलेगा, दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। मतलब the loop on columns for R2 will be same as loop on rows on second. So it will be like generic loop, same loop. So I am taking this as K, like the loop is K. So K will be 0, 1, 2, 0, 1, 2. So multiply R2, comma K with K, comma C1 plus R2, comma K into K, comma C1 plus R2, comma K into K, comma C1. Yes or no? Yes or no? The K will be 0, the K will be 1, the K will be 2. So R2 into 0 plus 0 into 41. R2 into K plus K into 41, that is C1. Plus R2 into 1, that is 21. Into, you can say K, that is 1, into C1, that is 51. Plus R2 of 2, that is 22. Into, we can say 2 of C1, that is 61. So there will be only one loop. Inside the outer two loops, there will be only one loop. There will be only one loop. And I am saying that is K. So int K is equal to 0. K is less than what? Like how many times it is running? Currently it is running for 3. What is 3? What is 3? It is running for 3 times. K0, K1, K2. Or K0, K1, K2. What is this? Sorry? Matrix dot length, m1 dot length. Either it is first matrix number of columns, that is 3, or the second matrix number of rows, which is 3, like it is same, then only we can multiply. ये भी 3 है, ये भी 3 है, तभी तो हम बराबर बोलना चाह रहे थे भाई, ये भी 3 होने चाहिए, ये भी 3 होने चाहिए, पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज बराबर होने चाहिए. That is, we can multiply them simultaneously, we can take the product and add them. So it can be, you can say R2, sorry, you can say it can be C1 or you can say it is R2 because both are same. So I am taking it as R2. You can take it as C1 also. It is your wish. K plus plus. So any resultant will be M3 of row, comma column. Any resultant, what we are doing in order to calculate any resultant, what we are doing for 2, 1, what we are doing? Resultant of 2, 1. We are saying running a loop and adding all the pairs, yes or no? Adding all the pairs, adding multiplication of this pair plus this pair plus this pair, adding all the pairs. So whatever the resultant of addition is, whatever the previous resultant is, add the current multiplication, or you can say current multiplication is first matrix R1, sorry, first matrix row, comma K into second matrix. What? Second matrix what? बताओ क्या लगता है क्या होगा सेकंड मैट्रिक्स का? रो कॉमा के को कौन सा कॉमा क्या मल्टीप्लाई करना? के कॉमा कॉलम, के कॉमा कॉल. It will be multiplied with k comma col. Now this is done. Now you can print it. You can print it simultaneously, like you can print it here also. But let's print afterwards. So I am running a loop again on the resultant for printing. You have to also print obviously. So I am running a loop on resultant to print it. So system.out.print M3 of row, comma column along with the space, and don't worry, I will also do a dry run. System.out.println. So now the code is complete. Let's run it and check whether if there is syntax error or not. अरे वाह, पहली बार में submit हो रहा है. So let's submit also. Okay, so all the test cases are passing. Please go through the code. I am giving you 4 minutes. After 4 minutes, I will do the dry run. Please go through the code and write any of the doubts which you have in your mind in the chat. जो भी कुछ दिमाग में doubts आ रहे हैं वो सारे chat में लिख दो, मैं सबको address कर लूंगा. And also while doing the dry run, it might be that your doubts will automatically get resolved. हो सकता है कि जब मैं dry run कर रहा हूँ तो वो dry run करते करते ही आपके doubt solve हो जाए. I am sharing the code in the discussion also.
तो मेरे को ये बताओ अगर ये कोड मिल जाता आपको, मतलब ये वाला कोड मिल जाता, मेन वाला फंक्शन आपको मिल जाता, ये आपको ना लिखना पड़ेगा। अगर इनपुट आउटपुट यू डू नॉट हैव टू राइट, लेट्स सपोज अज्यूम। So is this code very large? Like is this code very large, similar to spiral traversal? Spiral जितना बड़ा है क्या ये कोड, या फिर exit point जितना बड़ा, या फिर diagonal जितना बड़ा कोड? Diagonal तो चलो छोटा था, लेकिन diagonal जितना कॉम्प्लेक्स कोड वैसा तो नहीं है। बस 2 लूप की जगह 3 लूप है, इतना सा फर्क है। अगर ओवरऑल पिक्चर देखोगे, इतनी राम कहानी के बाद ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? 3 लूप्स हैं 2 लूप्स की जगह। एडिशन में 2 लूप होते थे, मल्टीप्लिकेशन में 3 है। अब बस वो डायमेंशन देखने हैं, वो 3 लूप देखने हैं कैसे कैसे चलाना। ठीक है, तो 4-5 मिनट लो, इसको समझो, खुद से समझो, फिर मैं ट्राई करता हूँ। अब देश अभी के लिए डाउट लिख दो या तो चैट में, या फिर अभी वेट करो 4-5 मिनट तक, एक बार खुद से सोचो कैसे होएगा, फिर मैं डाउट तो क्लियर कर ही दूंगा ड्राई रन के बाद। आज यही क्वेश्चन होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली पूरी क्लास में। अमन चैट में भेज दो एक बार अपना कोड, डिस्कस में अभी मैं खोल नहीं पाऊंगा, चैट में भेज दो। कौन क्या नहीं ले रहा? जबरदस्ती दोगे तो कैसे लेगा कोई? मैट्रिक्स 1 डॉट लेन, मैट्रिक्स 2 ऑफ 0 डॉट लेन, लूप लगाया, तीसरा लूप लगाया, और सी ऑफ आई जे को बोल दिया मैट्रिक्स आई कॉमा के और के कॉमा जे। कर दो ठीक है यार, कर दो ठीक है। अगर एन नॉट बराबर ए, एन नॉट बराबर ए, तो -1 रिटर्न, वरना रिजल्टेंट बनाया, उसके ऊपर लूप लगाया और प्रिंट करवाया। एक करा तो ठीक है एकदम। जो भी खाली बैठा हो, जिसने पहले से सबमिट कर दिया हो, प्लीज एक बार। अच्छा ये नहीं है क्या? यही है क्या? अच्छा ये नहीं है, और कौन सा है फिर? ऊपर तो मेरा ही है। ठीक है भाई साहब, ये क्या कर दिया, पहला मैट्रिक्स लिया, फिर दूसरा मैट्रिक्स लिया। एक तो यार वेरिएबल बहुत गंदे नाम लेते हो यार आप, M1 N1 खुद ही कंफ्यूज हो गए। अच्छे नाम ले लिया करो, मतलब ट्राई करो M1 M2 N1 N2 ले लो, और उससे भी बढ़िया R1 R2 C1 C2 ले लो, क्योंकि M और N में आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। सो N इज नॉट इक्वल्स टू M1, सो -1, अदरवाइज
make a matrix of M cross N1, M cross N1, run a loop, resultant of I comma j will be matrix of, यार ऐसे नहीं कर सकते, ये ऐसे मैट्रिक्स ऑफ आई पास नहीं कर सकते, आपको पूरा मैट्रिक्स ही पास करना पड़ेगा 2D वाला, और आपको बताना पड़ेगा मेरे को ith रो चाहिए, ये बोलना पड़ेगा। आप ऐसे भले ही वो एरे ऑफ रेफरेंसेस है, लेकिन मैट्रिक्स ऑफ आई इस तरह से नहीं ले सकते, वो गलत हो जाएगा। क्लियर है अमन? ठीक है, मैट्रिक्स पूरा लो और उसका रो पास कर दो, मोस्ट प्रोबेबली यही दिक्कत है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। Okay. और यार प्लीज यार थोड़े जो लोग नीचे हैं, जो थोड़ा लीडर बोर्ड में नीचे हैं यार, प्लीज थोड़ा पुशअप करो, मतलब पुशअप नहीं थोड़ा अपने आप को पुश करो कि जो क्वेश्चन रहते हैं बीच बीच में वो थोड़ा सॉल्व करने की ट्राई करो। जैसे मतलब मैं इनको नहीं बोल रहा जो जिनके बहुत ही कम स्कोर है, मैं इनको बोल रहा हूँ 1000, 1200, 1500, प्लीज पुश योर सेल्फ, प्लीज पुश योर सेल्फ। Like currently my score is 1600, 1700, so at least try to bring the score till 1500, at least 1500 तो लाओ, एटलीस्ट 150 क्वेश्चन तो करो। मतलब 20-20 क्वेश्चनों का फर्क है ये, जैसे इनमें 10 क्वेश्चनों का फर्क है, यहाँ पे 20 क्वेश्चनों का फर्क है ऑलमोस्ट, यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन का फर्क है। ये 30 क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं ये? 30-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे आपने। Please try to submit all the questions which at least I have done. I am not saying practice all of them, but इतना तो कर सकते हो कि जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लो, और इसका ये मतलब नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, नाम लूं क्या? एक एक के नाम लूं? राहुल, विकास, मितेश, मोहित, रोशन, फैज अहमद, यश। यश पट्टीदार पहले तो डाउट पूछते थे, अब तो पूछते नहीं, पता नहीं क्या सीन है। आयरन स्टैक का पता नहीं कौन है ये। आयरन स्टैक मोहम्मद अली है क्या? नहीं, मोहम्मद अली थे या कौन थे? हाँ ठीक है तो आईडी चेंज कर ली या यही है अभी भी? तो सबमिट करो भाई, सबमिट करो, 20 क्वेश्चन और सबमिट करो, एटलीस्ट 20। फिर यश आ गए, एक और आदर्श, आदर्श 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 आदर्श, डाउट पूछते हैं क्या आदर्श? ठीक है, बाइक की आइनुल, आइनुल तो पहले थे ना आपके बैच में शायद से, उनको तो निकाल दिया जितना मुझे याद आ रहा है, पहले तो बहुत डाउट पूछते थे। ठीक है, समझ पा रहे हो? प्लीज जो थोड़े पीछे रह रहे हैं, कुछ रीजन आप में से किसी के पास? आदर्श, ठीक है, कुछ रीजन के नहीं कर पा रहे उतने सबमिट जितने मैंने करे हैं? मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है। क्या करना है सर? क्या करना है ठीक है, एक्चुअली मैं बाहर चला गया था। जो क्वेश्चंस आपने नहीं सबमिट कर रखे प्लीज वो सबमिट करो, जैसे कि आपका स्कोर 1200, 1300 जितना भी है, मेरा स्कोर 1600 है, तो आपका अगर 1200 है तो भाई 40 क्वेश्चन है ऐसे जो नहीं कर रखे, अगर आपका 1200 है तो। सिमिलरली अगर आपका 1300 है तो आपने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन है जो नहीं कर रखे, जो मैंने करवा रखे हैं, तो प्लीज उनको करो। ठीक है, क्योंकि फिर ओके। वही है ना, तलवार लटक जो लटक रही है वो इन्हीं लोगों के ऊपर लटक रही है निकलने वाली, क्योंकि ये भी स्कोर में ऐड होता है, ये भी आपका स्कोर में ऐड होता है कि किसने कितने क्वेश्चन करे हैं लाइव क्लास में। मेरा हाथ दुख गया राइस करते करते पूछ लो यार अरमान, अनम्यूट तो कर रखा है सबको। हेलो हाँ सर, हेलो, आप ये थोड़ा जो डिजाइन करता है सर टेस्ट, उससे थोड़ी बात करो सर, एक आध टेस्ट केस या फिर ये एग्जांपल थोड़े ज्यादा दिया करें। क्यों गंदा आ रहा है क्या?
खुद सॉल्व करो तो सर समझ ही नहीं आता सॉल्व क्या करना है, आप करते हो तो फिर वो तो फिर हो ही जाता है। अच्छा, ये क्लास वर्क वाले की बात कर रहे हो या टेस्ट वाले की? क्लास सर वर्क दोनों वाले। में। सर दोनों में एक ही सर। सैंपल आता है, एक ही टेस्ट केस आता है। ठीक है, टेस्ट में भी एक ही सैंपल जिसके साथ है। हाँ, सैंपल भी एक ही आता है और विजिबल टेस्ट केस भी एक ही आता है। सर कभी कभी एक भी नहीं आता। यस सर। टेस्ट केस भी नहीं रहे थे कुछ कुछ क्वेश्चन के तो। किसी सर में तो टेस्ट एक केस भी चेंज था। हो रहे थे, एक बार 2 आए थे, एक बार 5 आए थे। ठीक है, सर बहुत उसका अच्छा। स्क्रीनशॉट भी डाला था मैंने। वैसे कोई एक बार लिंक भेजना जो लास्ट टेस्ट आया है, वो भी देख लो एक बार। सर वो टेस्ट केस चेंज होते रहते हैं, फिर टाइम के साथ टेस्ट टेस्ट केस केस भी चेंज चेंज होते होते रहते हैं। रहते हाँ सर। हैं। हाँ, मतलब टेस्ट के टाइम पे कोई और टेस्ट केस, बाद में कोई और टेस्ट केस। हाँ सर। गजब। एक बार भेजो यार कोई, फिर मैं बोलता हूँ। सर मुझे तो एक पैटर्न ही नहीं समझ में आया। कौन सा पैटर्न? सर मैं बता रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ बोलो। ये तो ठीक है, कम से कम एटलीस्ट पहला क्वेश्चन तो ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ठीक है। या इसमें भी टेस्ट केस की कमी है, बताओ। इसमें तो दो। सर वो आउटपुट सर ये इसमें स्पेस का प्रॉब्लम था। किसका लाइक आउटपुट इसमें कुछ और पूछा आउटपुट कुछ और है सर। स्पेस इतना दिया हुआ है लेकिन जब सबमिट करो तो वो स्पेस उतना नहीं ले रहे हैं। यार मेरे कान खराब हो गए लग रहा। बहुत ही आवाज गूंज सी रही है, थोड़ा मतलब माइक को क्लोज लाके और ज्यादा भी क्लोज मत लाना, थोड़ा सर दूर। स्पेस का प्रॉब्लम था इसमें, लाइक स्पेस था ही नहीं इसमें जब सबमिट करो तो। सर अच्छा, टेस्ट केस हेलो नहीं है ये बोल रहे हो सबमिट करने पर? टेस्ट केस पे कुछ और दिखता है सर, और प्रिंट कुछ और करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे कुछ और दिख रहा है और सबमिट करने पर कुछ और हाँ निकलते हैं, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। पक्का? हाँ सर। पक्का? हमेशा देख लेता हूँ लीडर करके बोर्ड देखो ना निकलता है। सर। यार 10-10 मार्क्स आ रखे हैं तो टेस्ट केस अलग कैसे हो सकते हैं? बताओ भाई, जिनके 10 मार्क्स आए हैं ऐसा ही था क्या ऋषिकेश? सर ने टेस्ट केस एक बार अलग था और दूसरी बार अलग था। मतलब मैंने यही एक कोड सबमिट किया तो 8 मार्क्स मिला, फिर वही फिर से सबमिट किया तो 10 मार्क्स मिल गया। चलो बाकी देखता हूँ। टेस्ट केस चेंजेस होते रहते हैं इनके। इसमें तो भाई सैंपल ही हाँ सारे दे सर, रखे ये हैं। बाद में डाला है, ये मैंने जब कंप्लेन किया ना तब डाला, एक ही सैंपल था। अच्छा, मतलब टेस्ट के टाइम पे कंप्लेन किया तो तभी डाल दिया या टेस्ट होने के बाद डाला? सर टेस्ट के टाइम में डाल दिया। अच्छा, जैसे इसमें एक ही बता रहे हो आप। तो प्रिंट कॉलम्स हैविंग इवन नंबर ऑफ rows, प्रिंट एम शेप मैट्रिक्स और नॉट। ठीक है। जैसे सर यही वाला क्वेश्चन ले लो जो अभी सॉल्व सर करा ये हमने, लास्ट के 2 तो मैट्रिक्स वाला। रिपीट ही थे। कौन ये सा लास्ट के क्वेश्चन? 2, लास्ट के दो ले लूं? लास्ट के 2 रिपीट थे सर। अच्छा, रिपीट थे और टेस्ट केस भी नहीं है एक भी। ठीक है, तो उस टाइम भी बोला था आपने जिस टाइम टेस्ट हुआ था? हाँ सर। सर रिप्लाई तो दिया ही नहीं कुछ। ये भाई साहब सबमिशन आते कहाँ से है फिर? मतलब कुछ लोग तो ठीक है, चलो क्लास में भी। सर हिडन टेस्ट केसेस रहते हैं वहाँ पे। वो तो ठीक बात है, लेकिन कुछ लोगों के तो चलो क्लास में आता है रिप्लाई, जैसे श्वेता का, विश्वजीत का, गोपाल कृष्णा। देखो जरा एक आधे की कर ले रोस्टिंग। गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा। मतलब वो टेस्ट सिर्फ आप ही के बैच का है ना? हाँ सर। रुक जाओ, करता हूँ कुछ। चलो, जो सबसे पहले समझे ना उनका देख लेते। प्र प्र क्या नाम है? नाम प्रसाद हिरुए। कॉपी करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं। तो कितने सबमिशंस हैं?
भाई साहब आधे से ज्यादा तो खाली पड़ा है, आधा से ज्यादा माल तो खाली पड़ा है इनका। गजब, मतलब छोटे मोटे कोड कर रखे हैं सबमिट, अभी तक खाली पड़ा है। डिड नॉट अटेम्प्ट, मतलब यहाँ पर तो क्या था, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं कर रखे हैं, 10 मार्क्स है। मेरे को लगा ये नहीं कर रखा, अच्छा ये वाले नहीं कर रखे, ये वाले डिड नॉट अटेम्प्ट है, ये सारे कर रखे हैं, सारे कर रखे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बच गए जो भी थे। और कौन है वैसे, ये देखें आरसी, आरसी जनाब, मेरा है सर, क्या नाम है? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्रा को देते हैं रिप्लाई। और कुछ देखते हैं, ऋषिकेश भी देते हैं, राज गुप्ता, लेट्स सी। वैसे जो चीटिंग वाले होंगे वो सबसे पहला सबमिशन थोड़ी ना करते हैं, मतलब कम से कम 5-10 सबमिशन होंगे, फिर जो चीटिंग करवाते हैं सर उनके इंटरनेट से कोड मिल जाता है सर। इंटरनेट से मिल जाता है। फिर देख लेते हैं इनके कितने सबमिशन है। लेकिन चीटिंग करने वाले ना बहुत तेज होते हैं, वो सबसे पहले सबमिशन नहीं करेंगे, वो थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा टेस्ट का एंड होने का वेट करेंगे, फिर जाके सबमिशन मारेंगे। मुझे पता है ना, हमने भी काम कर रखे हैं ये कॉलेज में। ठीक है, इनके भी ऑलमोस्ट है सबमिशन। सर चीटिंग आगे तो देखेंगे। सर चीटिंग पकड़ने का यही तो आइडिया है, लास्ट में जो सबमिट करे वही चीटर है। नहीं ऐसी बात तो नहीं है, कुछ उसमें से जेन्युइन भी होंगे। नहीं सर, जिनको मिलता नहीं है वो लास्ट में वेट करते हैं कि कोई दे देगा। चलो देख लेते हैं। अनिल बदानी, लेट्स सी, 10 मार्क्स आए हैं, सबसे लास्ट में सबमिशन करें। देखो, और ये बोला गया है मेरे को गिगस्टर की तरफ से, तो मैं कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट जानबूझ के नहीं करना चाहता। ये मेरे को बोला गया गिगस्टर से कि भैया प्लीज थोड़ा देख लो, क्लासेस में लोग सबमिशन क्लास में कम कर रहे हैं लेकिन टेस्ट में इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं। खाली है सर इसका तो सब कुछ। पकड़े गए, सब कुछ ही खाली है भाई साहब। और इसमें शायद सर टेस्ट में एडमिशन ले रखा है। नहीं, सिर्फ टेस्ट में एडमिशन कैसे ले लेगा बंदा, गिगस्टर में तो होना चाहिए तभी तो आएगा। प्रोग्राम बनाया सर, हैक कर लिया होगा कुछ भयंकर, टेस्ट में आता होगा। इतने इतने भले लोग नहीं हो तुम तो सिर्फ टेस्ट देने आओ। चलो एक और देख लेते हैं, सेकंड लास्ट देख लेते हैं। अमन, अमन वही है क्या, ये अमन चौरसिया हो गया, अमन यूनिवर्सिटी? नहीं, ठीक है, तुम्हारा क्या हैंडल है अमन चौरसिया? यो है उसका। सेकंड रैंक है, ओहो सेकंड रैंक। चलो इसका देखते हैं। अगर मैं बन जाऊं ना टीचिंग सर असिस्टेंट। ये प्रांशुल वाला मैडम का है सर, सॉरी, ये प्रांशुल वाला मैडम का है। प्रांशुम क्या, किसका है? श्रेया मैम का है। अच्छा श्रेया मैम का है, ठीक है। अगर मैं बन जाऊँ टीचिंग असिस्टेंट तो आधे को पकड़ लूँ, बैच अभी ये 100 का 50 हो जाए। चलो कोई नहीं, मत करो यार प्लीज ऐसी हरकतें, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप ही लोगों को होगी। सर वैसे पकड़ोगे कैसे सर? क्या होती है? पकड़ोगे कैसे, मतलब किन्नों ने चीटिंग की है किन्होंने नहीं की है? पकड़ा जाएगा, कोड मेरे सामने है, कोड देख के पकड़ा जा सकता है। इतने सारे ऑनलाइन वो तो होते हैं सर कि तो कोड कंपेयर कर लो, लाइन बाय लाइन चिपका रखा होगा तो ऑब्वियसली तो पकड़े जाओगे ना। हाँ, लाइन बाय लाइन आगे चिपका रखा हो, वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दोगे तो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हो क्या? तो सर पकड़ोगे कैसे, मतलब अगर 150 बच्चे हैं मतलब, और आप अगर बैठोगे मान लो, अगर किसी को बैठाओगे भी फिर भी बहुत समय कॉपी लगेगा। पेस्ट, सर कॉपी पेस्ट देखेंगे ना, सबने कॉपी पेस्ट किया होगा। देखो नहीं समय लगेगा ना, मैं थोड़ी ना कंपेयर करूंगा कोड। इतने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इतने सारे बॉट होते हैं, अब इतना बड़ा कोड फोर्सेस का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे 2 मिनट में पकड़े जाते हैं क्योंकि वो उन्होंने प्रॉपर बना रखे हैं सॉफ्टवेयर के कोड में सिर्फ वेरिएबल्स का नाम का चेंज हो
या फिर कोड में सिर्फ आपने लाइन ऊपर नीचे कर रखी हो एक आधी, वो पकड़े जाते हैं इजिली। अरे तो सर करोगे भी क्या आप पकड़ के? धोखा अपने आप को दे रहे हैं। अरे तो सर क्वेश्चन तो सेम है ना फिर। क्वेश्चन सेम है लेकिन कोड जरा सा तो अलग होगा। ये थोड़ी ना सिर्फ वेरिएबल के नाम चेंज, इतना ही फर्क होगा कि दो जनों के कोड में सिर्फ वेरिएबल का नाम का चेंज होगा। नहीं, मैं तो स्पेस भी बदल देता हूँ। ठीक है, सही बात है। नहीं तो सही में चीटिंग मैं की है, स्मार्ट चीटिंग। गजब भाई गजब। चलो रायरन कर लें अब, चीटिंग के टिप्स सबको ना देने से अच्छा। सर मेरा रन टाइम एरर दे रहा है। एक बार पहले मैं रायरन कर लूं, फिर आपका देख लेंगे कोड। आप जब तक कोड डिस्कस सेक्शन में भेज सकते हो। भाई रो 1 कॉलम 1 चेक ओके कर सर। ले। Okay, so let us do a dry run. Let us bring this matrix. Let us bring the second matrix also. And let us bring the code also. Okay, and this also. इतनी जगह तो नहीं है हमारे पास। कोड दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा शायद से। अब दिख रहा है? अब हल्का फुल्का दिख रहा है कोड? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं देखो ध्यान से। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेइंग run a loop on the resultant, run a loop on the resultant, that is run a loop on row, run a loop on column. The resultant will have R1 number of rows, it will have 4 number of rows, and R2 number, sorry, C2 number of columns, R1 comma C2. So first loop will be on the rows of resultant, that is 4 times. First loop is for R0, R1, R2, R3. Then what we are saying, we are saying run a loop on columns C0, C1, C2. That is take one cell at a time. Take one cell at a time. Using these two loops, we are taking one cell at a time. And using that cell, what we are doing? We are adding the multiplication of the pairs. We are multiplying two elements and adding that multiplication in the resultant. Taking new pair, multiplying it, adding it in the resultant. New pair, multiply it, add in the resultant in the same cell. So what we are saying? First, let us take 0, 0. That is R is 0, row is 0, and column is also 0. 0, 0. So for 0, 0, what we are saying? Run a third loop also. That is for 0th row of first matrix and 0th column of second matrix simultaneously. Same, like together. So take the element of R, K and K, column. R, K and K, column. Why? Because R of first matrix will be fixed as R0. It will be fixed as R0. And column of second matrix will be fixed as C0. So row of the first matrix will be the same as row of the cell. It will be row only. And the column of the second matrix will be same as the column of the cell, which is C0. So row of M1 and column of M2, it is fixed. And what is changing? The changing part is K. The changing part is nothing but K. And we are saying K is changing same, like it is becoming same. The column of first 0, 1, 2 and the row of second 0, 1, 2, it is changing simultaneously together from 0 till number of columns in the first or till number of rows in the second, that is R2, or you can also write it C1. It is your wish because R2 is same as C1. If R2 is not same as C1, so print -1. Obviously, number of columns in first should be same as number of columns in second. So third loop will be on the columns of first or at the same time rows on the second. And what we are saying, multiply the rowth of M1, the 0th row of M1 with the 0th column of M2. That is M1 of row, K, 0, 0 with 0, 0 again, plus 0, 1 into 0, sorry, 1, 0, 1, 0, that is 50, plus 0, 2, 0, 2, row, K into K, column, that is 2, C0, 2, 0. So add this, all the multiplications, add R0, C0. Add the multiplications, all the multiplication pairs in the resultant M3 of row, column. Similarly, what you have to do? Similarly, you have to do for
R0 C1. So for R0 C1, what will be R0? Like which matrix will be R0? R0 कौन सी मैट्रिक्स से लेना है? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से. First matrix से. First matrix will be representing rows. Second matrix will be representing columns. That is, run a loop on rows. 0 1 into 4 1, 0 2 into 5 1, 0 3 into 6 1. That is, row of first matrix is the same as cell. Is same as cell's row. Cell's row. M1 of row. And the column of second matrix, that is C1, is same as cell's column. It is C column only, call. And what is changing? Changing part is K. It is changing same 0 1 2 0 1 2. So row comma 0 into 0 comma column plus row comma 1 into 1 comma column plus row comma 2 into 2 comma column. So add all these in the resultant. Add all these in the M3 of row comma column. Similarly, you have to do it for all the cells. For one cell, I am again showing. Let's see for let's see for R2, or let's see for R1 comma C2. Let's see for R1 comma C2. So in order to calculate for R1 comma C2, which will be R1, which will be C2? R2 comma C2. What will be R1, what will be C2? R1 will be R1 first matrix का and C2 is second. Yes. Initially, matrix of 3, that is resultant, initially it will be storing 0. Matrix of 3 of 1 comma 2, it will be storing 0. It will be storing 0 initially. All the cells initially, the default value of integers are 0. So 0 plus pair, 0 plus pair. The first pair is nothing but the row of first into column of second. That is row of first into 0 plus 0 into column. That is 10 into 42. Store whatever is the resultant, 420. Now, in 420, in the previous resultant, add the current pair. So what is the new pair? The new pair is row comma 1 into 1 comma column. That is row 1 comma 1 into k, whatever is the k, whatever is the iteration. That is 1 comma 2. So multiply 11 with 52. Multiply 11 with 52. Whatever is the resultant, add it and form the resultant. Store it in the resultant matrix of row comma column. Let's say it is X. And finally, multiply 12 with 62. Row comma K, row comma 2 with K comma column, with 2 comma column. So in whatever is X, whatever the previous resultant was, add the new resultant, which is 12 into 62. 12 into 62 and store it in the same cell. Is it clear? Is it clear, everyone? Yes, sir. अब ठीक है. अब जिनको भी डाउट से पूछ लो एक एक करके. सर मुझे के नहीं समझा सर. के नहीं समझा. देखो हम क्या बोल रहे हैं. हम बोल रहे हैं पहली मैट्रिक्स का रो तो क्या है, मेरे सेल का ही रो है. अगर मेरे को 1,2 वाले सेल पर फिल करनी है वैल्यू, क्या वैल्यू आएगी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भैया रो जो होगी पहली मैट्रिक्स की वो मेरी वाली रो है, वो मेरी वाली रो है, तो रो है वो. जो मेरे वाले सेल का कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम है, वो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम है. और पहली मैट्रिक्स का दूसरा डायमेंशन यानी कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का पहला डायमेंशन यानी रो, वो क्या है, वो सेम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं. मतलब इसका रो तो फिक्स था, इसका कॉलम तो फिक्स था. अब बचा क्या इसका, अगर रो फिक्स है तो कॉलम पढ़ लूं, अगर कॉलम फिक्स है तो रो पढ़ लूं. लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जो भाई लूप लग रहा है वो ऐसा नहीं लग रहा कि 1 0 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो. यानी नेस्टेड नहीं है. ऐसा नहीं है कि बाहर वाला फिक्स करो अंदर वाले पे लूप लगाओ. क्या हो रहा है, ये भी चल रहा है आगे आगे और ये भी चल रहा है आगे आगे. मतलब 1 0 को 4 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया इन दोनों का काम. 1 1 5 2 को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया इन दोनों का काम. 1 2 और 6 2 का मल्टीप्लाई कर दो. यानी ये वाला लूप भी चल रहा है, साथ के साथ ये वाला लूप भी चल रहा है. ये वाला किसके ऊपर है, पहली मैट्रिक्स के कॉलम के ऊपर. ये सुन लो, ये वाला पहली मैट्रिक्स के कॉलम के ऊपर है, 0 1 2. यस. कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम. और ये वाला जो लूप है ये किसके ऊपर है, ये रो पे. ये रो के ऊपर है, दूसरी मैट्रिक्स की रो 0 1 2. हम क्या बोल रहे हैं, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो, पहली मैट्रिक्स का कॉलम 0 1 2 और दूसरी मैट्रिक्स का रो 0 1 2 साथ साथ चल रहे हैं. दोनों के हैं, तो के 0 से लेकर <3 तक जा रहे हैं. अब बात समझ आइए. यस सर, यस सर. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? समझ आया? हार्ड क्वेश्चन था ये, इट वाज अ हार्डर क्वेश्चन.
not that much hard, but yes, the category on GFG it is written hard. GFG पर ये hard बता रखा है. Time complexity आप ही बता दो. 3 loops. 3 loops. How much is the time complexity? n cube. N cube. So in order to multiply two matrices, it is not n square because there are 3 loops. It is n cube. And sir, space complexity? See, क्या कुछ हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं? आर वी टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस? और इज दिस द रिजल्टेंट? ये तो भाई जो क्वेश्चन मांग रहा है वही दे रहे हैं ना. क्या ये मैट्रिक्स क्वेश्चन मांग रहा है हमसे कि भाई मेरे को मल्टीप्लाई करके एक रिजल्टेंट दे दो? हाँ या ना? यस सर. यस. तो भाई ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस है ही नहीं इस पूरे में. सिर्फ 4 ही तो वेरिएबल है, R1 C1 R2 C2 और रो और कॉल. ये 4 ही या 6 ही वेरिएबल्स हैं. तो 4 वेरिएबल्स यानी 4 × 4 16 बाइट्स तो कांस्टेंट स्पेस है, क्योंकि ये मैट्रिक्स आउटपुट का स्पेस है. ये दो मैट्रिक्स इनपुट का स्पेस है. इनपुट का स्पेस आल्सो वी डू नॉट टेक, आउटपुट स्पेस वी डू नॉट आल्सो टेक, and currently there is no recursion also, so space is constant, there is no extra space. Clear है? एक्स्ट्रा किस बात की हो गई? जो चीज आपसे मांगी जा रही है, अब आपसे आपके कैलकुलेटर से मांगा जा रहा है मेरे को रिजल्टेंट दे दे एडिशन करके, तो वो एक्स्ट्रा काम है क्या? कैलकुलेटर का वो मेन काम नहीं है क्या? उसको जो चीज देनी है वो तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके देनी पड़ेगी ना. अगर मेरे को 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो 2 मैट्रिक्स को तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स ही तो लगेगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ही तो होएगा. तो ये एक्स्ट्रा थोड़े ना काम हुआ है, ये तो करना ही था, यही तो मांगा था. तो ये एक्स्ट्रा किस बात का हो गया? बात समझ आई चंद्र प्रकाश मौर्य? ठीक है सर. हाँ जी. सर जो ऊपर सर हमने फंक्शन लिया मैट वाला, हाँ सर उसमें जैसे हम इंट R1 इंट C1 ये अगर सर आगे पीछे हो जाए तो फंक्शन रन नहीं करेगा. हाँ, क्योंकि पहले मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, तो अगर आगे पीछे कर लोगे तो रन नहीं करेगा. मतलब रो को अंदर ले लोगे, कॉलम को बाहर ले लोगे. यही वाले दोनों बोल रहे हो ना, ये वाला और ये वाला? नहीं सर, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं, जैसे हम ऐड टू मैट्रिक्स करते सर, हाँ. और जो हम खुद फंक्शन क्रिएट करते हैं उसमें हम जैसे इंट array1 और इंट array2 फिर इंट R1 इंट R2 अगर सर ये आगे पीछे हो जाए तो सर. देखो इसमें अगर आप ऐड कर रहे हो तो ऐड में ये जो बाहर वाले 2 लूप्स हैं या फिर यहाँ पर ये जो रो वाला कॉलम वाला लूप है, ये इंटरचेंज आप कर सकते हो. मतलब बाहर कॉलम ले लो, अंदर रो ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. आपको करना क्या, आपको सारी सेल्स की वैल्यू फिल करनी है. अब आप उसको ऐसे चलाकर ऐसे ऐसे करके फिल कर दो, पहले ये वाला फिर 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 ये वाला, या फिर आप इस तरह से फिल कर दो कि भाई पहले मैं इन सबको फिल करूंगा, फिर इन सबको फिल करूंगा, फिर इन सबको फिल करूंगा. बात सेम है. तो ये बाहर वाले लूप्स इंटरचेंज कर सकते हो, इनको अदला बदली कर सकते हो. नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा सर. और क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था ऐड टू मैट्रिक्स सर. हाँ. तो उसमें सर जो हमने खुद फंक्शन क्रिएट किया था, जो उसके अंदर हमने वेरिएबल दिए थे सर. यहाँ पे इस वाली लाइन की बात कर रहे हो? अगर मैं ऐसे 2 वेरिएबल्स ले रहा हूँ? नहीं इसकी वाली, उससे ऊपर वाली की सर, इससे ऊपर वाली की. ये जो फंक्शन बना रखा सर हमने. एडिशन बोल रहे हो ना? जी. जाने दो एडिशन तक. 18 पे 19 पे था सर शायद. 19 पे? ये रहा नहीं 18 पे है सर. 18 पे ही है. ठीक है. तो 18 पे ऐड टू मैट्रिसेस, इसमें कौन सा लाइन सर? सर वो बोल रहा है कि पैरामीटर अगर इंटरचेंज कर लें, पहले R1 की जगह R2 लिख लें, ये सब शायद. कौन सी लाइन में? मतलब पैरामीटर्स में? जी सर, 5th लाइन में सर. 5th लाइन में? हाँ गलत हो जाएगा, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो R1 क्या है? R1 पहली मैट्रिक्स के रोज है. C1 क्या है? पहली मैट्रिक्स के कॉलम है. R2 क्या है? दूसरी मैट्रिक्स के रोज है. C2 क्या है? दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम है. तो अगर आप गलती से यहाँ पे R2
C2 भेज दोगे या फिर यहाँ पे C1 R1 भेज दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम समझ तो यही रहे हैं ना कि R1 तो पहली मैट्रिक्स के रोज है, उसी के बेसिस पे हमने एडिशन का लॉजिक लिखा है, तो ये इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये इसी ऑर्डर में होने चाहिए। हाँ ये है कि अगर आप पहले C1 ले रहे हो तो फिर आपको पास भी पहले C1 करना पड़ेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर R1 R2 C1 C2 ले रहे हो तो फिर आपको नीचे से भी पास R1 R2 C1 C2 करना पड़ेगा, वो कर सकते हो आप। लेकिन जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पर लिया है उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। ओके सर, आज मैंने करके देखा सर, टेस्ट केस तो पास हो गए बट सबमिट के टाइम पर एरर आया। वो आपने जैसे यहाँ पे चेंज नहीं करा होगा, दोनों जगह सेम चेंज करना है। अगर यहाँ पे ऑर्डर चेंज करा है तो इधर भी करना पड़ेगा। फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग दोनों जगह सेम होना चाहिए ऑर्डर। सर पैसे पैरामीटर वाइज दे सकते हैं ना, लाइक R2 इज इक्वल टू R1 जैसे। पैरामीटर दे सकते हैं मतलब R2 इज इक्वल टू R1। लाइक सर जब कॉल कर रहे हैं हम तब वहां पे पैरामीटर दे सकते हैं ना आर्गुमेंट के साथ, इक्वल टू R1 इक्वल टू R1 C1 इक्वल टू C, अगर हमें चेंज करना हो तो। अच्छा नाम चेंज करने हो, हाँ नाम चेंज कर सकते हो, वो कर सकते हो ऑब्वियसली। आपके मेन फंक्शन में नाम XY हो जाए, उसमें AB हो जाए, उसमें PQ हो जाए, वो कर सकते हो। कॉपी तो हो रहा है बस। सर ये पैरामीटर पास बाय वैल्यू होते हैं ना सर? हाँ जी पास बाय वैल्यू होता है, कॉपी क्रिएट होती है। ओके सर। अली भाई माइक बड़ा तगड़ा है तुम्हारा, सही में मैं भी दुखी हूँ, पूरे एलीट बैच में दुखी रखा है इतना तगड़ा माइक है, पूरी अंदर की हवा उस माइक पे घुसती है सर बोल देते, आपने कभी बोला ही नहीं। मैं बोलता नहीं हूँ कि थोड़ा मतलब क्लियर बोलो, थोड़ी लाउड आवाज में बोलो हमेशा आवाज गूंजती रहती है आपकी। सर ये लाइक मैं म्यूजिक की वजह से लिया था ये माइक, लेकिन लाइक अभी ज्यादातर बात ही करता रहता हूँ। कोई नहीं सर 180 वाले डिग्री क्वेश्चन पे सर एक जुगाड़ और लगा, दोनों लूप रिवर्स कर दिए सर। बहुत ही बढ़िया, इसी जो गार्ड पर जिंदा हो आप। सर मतलब आप वाला तो मैंने सॉरी पहले कर दिया था, अच्छा तो यार मैं बाद में जुगाड़बाजी से करना, लूप उल्टा मत कर देना, क्योंकि इनपुट आउटपुट हमारे हाथ में नहीं होता कई बार। ठीक है, किसी को कुछ मतलब इंटरव्यू तो नहीं, किसी को कुछ आपके टेस्ट के संडे वाले टेस्ट के किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं? सर और नहीं कराओगे क्या प्रॉपर? नहीं मैट्रिक्स मेरी तरफ से एंड है। वो जो एक क्वेश्चन है काउंट ऑफ स्क्वायर वाला, वो डीपी का क्वेश्चन है, तो वो मैं अभी नहीं करवा रहा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन डाल दिया समझदार लोगों ने। ठीक है, इसको सर छोड़ नेक्स्ट टॉपिक। बाकी सारा मैट्रिक्स हो चुका है हमारा। सर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मंडे से स्ट्रिंग्स, फ्रॉम मंडे वी विल डू स्ट्रिंग्स। सर स्ट्रिंग तो टेस्ट में देते ही रहते हैं कोई नहीं, इसे टेस्ट में और झेल लो स्ट्रिंग को। हाँ ओके सर। एम वाला कराइए, एम वाला क्वेश्चन भेजो यार, एम वाला। अभी शायद किसी ने भेजा तो था लिंक, दोबारा खोलते हैं। दोबारा कहाँ मिलेगा, एक बार दोबारा लिंक भेजना कोई। ठीक है, मैट्रिक्स एरेज ये दोनों टॉपिक समझ आए हैं सबको? एरेज एंड मैट्रिसेस, 1D एरे एंड 2D एरे, सबको समझ आया है? हाँ सर। यस सर। नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस विद ऑल वंस, ये मैं नहीं करवा रहा अभी रुद्रा, क्योंकि ये डीपी का क्वेश्चन है, अभी के लिए स्किप कर सकते हो आप उसको। एम शेप सर मंडे को मैट्रिक्स ही होगा या फिर स्ट्रिंग चालू होगा? स्ट्रिंग मैट्रिक्स आज लास्ट क्लास, बहुत तंग आ गया मैट्रिक्स। Okay, so what is the question? The question is take n as an integer input, take a matrix with n rows n columns, that is take a square matrix,
take input of all the elements in row wise as we know. Check if the matrix is M shape or not, and print true or false, whatever is the shape. And what is the M shape? Like, obviously you know M shape. So let me bring this. This is a M shape. You can see there is a M shape. All the ones are in shape of M, 5 cross 5 matrix. But the next matrix, sample input 1, is it a M shape matrix? Are all the, like in all the M cells, is it the same value? Is it the same value? No, the next is not a M shape matrix. It is not a M shape matrix. It is not. Why? Because this cell is not 1. It is 0. So it is not a M shape matrix. Next, 7 cross 7 matrix. Is it M cross M? Sorry, is it M shape? Is it M shape? Yes or no? अरे भाई नीचे आंसर देख लो, फॉल्स बोलने से पहले ट्रू लिखा हुआ है. Yes, every cell is M, like every cell is the same. It is 1, it is 1, it is 1. So it is a M-shaped matrix. Now for next, for this cell, sorry, this is written false. This is written false. So let's see what is wrong here. What is wrong here? So for M shape, it should be like this. It should go like this. But it is going like this, and it is like this. Is it M? Is it M? No. Here it is only this much. Like one cell is less, which is M. Here one cell is extra. One cell is extra. यहाँ पर एक cell कम है जो 1 है. यहाँ पर एक cell extra है जो 1 है. Only the cells which are on the M should be 1. Otherwise, like from my point of view, the question is like this. All the cells which are not on M, they should be 0. And all the cells which are on M, they should be 1. Here, this cell is not on M, so it should be 0. But it is not, so it is not M-shaped matrix. Here, since this cell is on M, it should be 1. So it is not M-shaped matrix. मतलब जो M के ऊपर आ रहे हैं वो 1 होने चाहिए, जो M के ऊपर नहीं आ रहे वो 0 होने चाहिए. मेरे हिसाब से ये है क्वेश्चन. क्या मैंने क्वेश्चन को सही समझा है? क्या मैंने क्वेश्चन को सही समझा है? ठीक है, तो कैसे चेक करें? इन सेल्स के ऊपर कैसे लूप लगाएं? First, can I say first entire row, it should be 1, sorry, entire not row, but first entire column, the 0th column, it should be ones only. Yes or no? In order to be a M matrix, all the cells in the 0th column, it should be ones. Similarly, in the last column also, it should be ones. In the last column, C of 4, here it is C of 4. Here it is C of 0, and here it is C of 6. First column and last column should have all the ones. Apart from that, can I say 2 diagonals, but only upper half of the 2 diagonals? One diagonal is like this, one diagonal is like this, one diagonal is like this, other diagonal is like this, one diagonal like this, other diagonal like this. So only the upper half of the 2 diagonals should be 1, remaining all should be zeros. सिर्फ दोनों डायगोनलों के वो इंटरसेक्शन पॉइंट से ऊपर वाले सारे 1 होने चाहिए, बाकी सारा 0 होना चाहिए. Yes or no? Now the only point is how to check whether the cell is on C0. It is pretty simple. If column is equal to C0, then pretty easy. Similarly, for last column, if column is equals to n minus 1, it is on the last column. Or operator, like it can be on both. For example, this cell, this corner cell, it is also on the C0 and it is also on the left diagonal. For example, this cell, it is also on the left diagonal, it is also on the right diagonal. So same cell can be in the both the like 2 things. It can be also a column, it can also be a diagonal, or it can be both the diagonals. So we have to use OR operator. First thing is this. But only condition is how we will check for this and how we'll check for this. How we'll check for these upper part of M, upper part of diagonals. कैसे check करें? If I bring this matrix and make it larger. So what is this? This is R0,
This is R0 C0. This is R1 C1. This is R2 C2. This is R3 C3. For a 7 cross 7 matrix, for 7 rows, 7 columns, the last cell where it should be present, like it should not be here, it should not be here. So for the last cell where the one should be present is R0 C0, R1 C1, R2 C2, R3 C3. So what is this 3? What is this 3 with respect to 7? What is 3 with respect to 7? It is 7 by 2. So can I say either column can be 0 or column can be 1 or sorry, not 1, but column can be last n minus 1, 6 column, or it can be the row is equals to column, the row is equals to column, but along with that, the row is equals to column, but along with that, it should not be like in the below half, it should not be in the below part. So along with this, it should be in the above half, that is and it should be in the above half. Row should be lesser than column by 2. It should be lesser than equals to column by 2. It should be lesser than equals to 7 by 2, lesser than equal to 3. रो और कॉलम बराबर होने चाहिए, R0 C0, R1 C1, R2 C2, R3 C3, but it is also R4 C4, R5 C5, but we do not have to take 1 here. So what we are saying, row should be equal to column, and along with that it should be in the upper half, then it should also be 1, then it should also be 1. मतलब इस वाले डायगोनल पे तो हो, लेकिन अबव वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में हो सिर्फ. ये बात समझ आ रही है? Row should be same as column, but only in the upper part, only the above half. Row should be lesser than column by 2, number of columns by 2, not column by 2, but number of columns or number of rows by 2, n by 2, n by 2. Or the last condition, what is the condition for these cells? What is the condition for these cells? This is 0, 6. This is 1, 5. This is 2, 5. Sorry, 2, 4. And this is 3, 3. So what is the condition for these cells? 0, 6, 2, 5, 3, 4. Sorry, 1, 5, 2, 4, and 3, 3. What is the condition? Okay, row plus column should be equals to n minus 1, but that will be true for all the cells. Row plus column इस वाले डायगोनल के लिए पूरे के लिए वैलिड है, लेकिन क्या हमें यहाँ पर भी 1 लाना है, यहाँ पर भी 1 लाना है? Row plus column is equals to n minus 1. It is valid for all these cells, but we do not have to make this also 1. We do not have to make this also 1. So it should be in the upper half only again. So first thing, first thing is row plus column. It should be equals to n minus 1. It should be equal to 6. Row plus column, 0 plus 6, 1 plus 5, 2 plus 4, 3 plus 3. But here it is also 4 plus 2. Here it is also 5 plus 1. But it should be in the upper half. That is, row should be lesser than equals to n by 2. Is this clear? Is this clear? If any one of these if condition is true, like if any one of these OR operators are true, if this entire if condition is true, it should be 1. Otherwise, it should be 0. अगर इनमें से कोई है सेल वो, तो वो 1 होना चाहिए. इसके अलावा वो कोई सेल है, तो वो 0 होना चाहिए. अगर ये वैलिड है, so yes, it is a M matrix. Otherwise, it is not. If this condition is holding true, it should be M matrix, otherwise not. So if this is there, like this entire thing should be 1. All the cells in this particular condition should be 1, else they should be 0. Else they should be 0. अगर वो ना तो 0th कॉलम में है, ना लास्ट कॉलम में है, ना तो अपर हाफ ऑफ लेफ्ट डायगोनल, ना तो अपर हाफ ऑफ राइट डायगोनल, इन चारों में से कहीं पर भी नहीं है वो वाला सेल, तो फिर उसको 1 होने का हकदार नहीं है. It should be 0 else. मैंने क्या बोला, या तो इधर हो या तो इधर हो, या तो वो लेफ्ट कॉलम में हो 0th कॉलम में, या तो वो राइट कॉलम में हो लास्ट कॉलम में, या तो वो इस वाले डायगोनल के अपर हाफ में, या तो वो इस वाले डायगोनल के अपर हाफ में. तो या तो और या तो इधर हो, या तो इधर हो, या तो इधर हो, या तो इधर हो, तो इन सब के बीच में और आएगा. लेकिन इसके बीच में मैंने एंड क्यों लिया है? क्योंकि अगर वो डायगोनल में है, अगर वो डायगोनल में है, डायगोनल में होना काफी नहीं है, वो उस डायगोनल के अपर हाफ में भी होना चाहिए. तो ये भी होना चाहिए, साथ के साथ अगर वो डायगोनल में है तो अपर हाफ में भी होना चाहिए. तो एंड भाई सिर्फ डायगोनल में होने से काम नहीं चलेगा, अपर हाफ में होना पड़ेगा. सिमिलरली सिर्फ राइट डायगोनल में होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो ये सारे एलिमेंट्स हैं. सिर्फ राइट डायगोनल में होने से काम नहीं चलेगा, वो अपर हाफ में भी होना चाहिए. इट शुड ऑल्सो बी इन द अपर हाफ. तो एंड ऑपरेटर. तो ये समझ आ रहा है कहाँ पे और ऑपरेटर, कहाँ पे एंड ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं.
जब दो चीजें एक साथ अकर करनी चाहिए, when two things should occur together, they should be and operator. When either of the two things can occur, either one can occur or the second can occur or both can occur, then it should be or operator. या तो ये हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए, या फिर इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन हो जाए, या तीन का कुछ कॉम्बिनेशन हो जाए, तो वन डालना है, वरना जीरो डालना। ओके, सो आई एम राइटिंग द कोड. Obviously you have to take the input, so for input I am using the already written codes. So let's copy the code of modify the matrix. Okay, and we are saying whatever the function returns, either it will return true or it will return false. Whatever the function returns M matrix, whether the matrix is M or not, we will take that. But the number of rows and number of columns are same, so I am taking it as N. I am taking it as N. N here, N here, N. Okay. So public static boolean M matrix integer square bracket M80. So in order to for a matrix to be square matrix, we will run a loop on all the cells. मतलब जो M के ऊपर है वो तो 1 होने ही होना चाहिए, लेकिन जो M के ऊपर नहीं है वो भी 0 होना चाहिए. तो सारे सेल से पूछना पड़ेगा, भाई तू M के ऊपर है, अगर है तो तेरे को 1 होना चाहिए. क्या तू M के ऊपर है? नहीं, तो तेरे को 0 होना चाहिए. Are you on M? Are you on the M shape? No, so you should be 0. If you are 1, then again it is not M matrix. Elements which are on M, they should be 1. Elements which are not on M, which are not on M shape, they should be 0. So I have to run a loop on all the cells, whether it is on M or whether it is not. So I am taking the n variable, number of rows as a matrix dot length, and I am running a loop on all the rows. Also, I am running a loop on all the columns. इतना clear है सबको? इतना समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा है? सारे सेल्स पे क्यों लूप लगाना है? मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है. ठीक है. तो if cell is on M, that is if column is 0, या तो column 0 हो, if cell is on 0th column, or cell is on last column, or it is in the left diagonal, but not only that, it should also be in the upper half. That is, it is in the left diagonal. Row is equal to column, but only this is not sufficient. Also, it should be in the upper half. That is, row should be lesser than equals to n by 2. It should be lesser than equals to 7 by 2, less than equals to 3. या फिर ये राइट डायगोनल में है, लेकिन राइट डायगोनल में भी होना सफिशिएंट नहीं है. क्या करना पड़ेगा? सिर्फ राइट डायगोनल में होना सफिशिएंट नहीं है, क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड बी डू? सिर्फ राइट डायगोनल में होना सफिशिएंट है? अनम्यूट कर रखा है मैंने. सिर्फ इसमें होना सफिशिएंट है 1 लेने के लिए, 1 आने के लिए? नहीं सर, n/2 में होना चाहिए. वो अपर हाफ में होना चाहिए. Upper half में. The upper half. So that is row should be lesser than equals to n by 2. It should be in the upper half. If this is true, मतलब वो m होना चाहिए, मतलब वो m वाला एलिमेंट है. If this is true, मतलब वो m वाला एलिमेंट है. तो m वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? What should be the element on m? 1. It should be 1. So if it is not 1, should we return false? Yes or no? Yes. If it is not 1, if it is 0, it should return false. Otherwise, अगर वो m के ऊपर नहीं है, if it is not on m, so what it should be? होना क्या चाहिए अगर वो m के ऊपर इक्वल टू 1. अगर वो 1 के m के ऊपर नहीं है तो वो 0 होना चाहिए. तो अगर वो 1 निकल गया तो फिर तो रिटर्न ट्रू सर. फॉल्स. m नहीं है मैट्रिक्स. अगर वो 0 निकल गया तो मैट्रिक्स m नहीं है. मतलब m के ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट 0 निकल गया, m के ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट 0 निकल गया तो गलत है. ओके. यस, m के ऊपर जो नहीं था एलिमेंट वो 1 निकल गया तो भी गलत है, तो गलत है. और वरना सब कुछ ठीक है तो ट्रू. बात समझ आ रही है? नॉट ऑन m शुड बी 0. इट शुड बी 0. m एलिमेंट शुड बी 1. भाई जो m के ऊपर है, जो m वाली शेप के ऊपर है, उसको 1 होना चाहिए. जो m वाली शेप के ऊपर नहीं है उसको 0 होना चाहिए. तो अच्छा क्वेश्चन था, पैटर्न का अच्छा क्वेश्चन था ये. मतलब अब तक पैटर्न पूछ रहे हैं मैट्रिक्स में भी पैटर्न घुसा दिया.
और ये चिंता मत करना ये मेरे को कैसे दिमाग में आ गया इतनी जल्दी। यार मैंने पेप कोडिंग में पढ़ा रखा है, पेप कोडिंग में ही क्वेश्चन था एम मैट्रिक्स वाला। पेप कोडिंग में एक क्वेश्चन था एम मैट्रिक्स वाला, मैं दिखा देता हूँ। पेप कोडिंग पैटर्न्स, यहाँ से दिखाता हूँ। एड्स एंड स्ट्रिंग में जाके गेटिंग स्टार्टेड में जाके एक हमारा एम शेप होगा कहीं ना कहीं। एम नहीं था वहां पे, डब्ल्यू था, बस इतना सा फर्क था, डब्ल्यू था। एम जैसा ही हो गया, अपर हाफ ना लेके यस सर, लोअर हाफ ले लो, डब्ल्यू का रिवर्स। एम का रिवर्स। तो करवा रखा है इसलिए मेरे को आता था इतनी जल्दी, मैं इसलिए बता पाया। ये मत सोचना कि हम इतनी जल्दी टेस्ट में कैसे सोच लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। रिपीट द इफ कंडीशन। कहाँ गया कोड, कोड कहाँ गया, कोड कहाँ गया। ठीक है, वैसे किसी ने इतना क्लीन लिखा था, किसी ने भी इतना क्लीन लिख पाए थे जितना मैंने क्लीन लिखा है अभी, या इससे भी छोटा लिखा था किसी ने? नो सर। नहीं सर, इतना क्लीन नहीं था। ठीक है, सर पहले कॉलम चेक किया, फिर अंदर वाला डायगोनल चेक किया था। सर मेरे को एक डाउट, पूछो। सर मैं जितने कोड लिख रहा हूँ सब गलत ही लिख रहा हूँ क्या? देखो होएगा, ऑब्वियसली रहेगा ये कि खुद से लिखने बैठोगे पहली बार में, जब मेरे को नहीं देखा होगा करते हुए, तो वो गलत लिखे जाएंगे। जैसे अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कौन ही पहली बार में सही लिख देगा? मैंने तो लिखा नहीं, मैं ऑनेस्ट रह रहा हूँ, तो मेरे को कहाँ से आ जाएगा दिमाग में 3 लूप लगाने हैं। अगर आधा 1 घंटा बैठता, 2 घंटे इस क्वेश्चन पे खुद बैठता, दिमाग लगाता, तो आ पाता समझ। लेकिन इतना टाइम है कहाँ हमारे पास कि एक एक क्वेश्चन पे 2-2 घंटे लगाओ। तो वही है कि एक बार देख लो, फिर उसके बाद खुद करने की ट्राई करो। पहले से खुद खुद से करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो जैसे इस पे सर है रो n/2, मैंने एक तो नया मैट्रिक्स बना लिया था इस पे एम पैटर्न स्टोर करके उसको कंपेयर कर दिया था। सर मैंने भी पहले वैसे ही किया था, वो ब्रूट फोर्स वाला वैसे लेकिन ही उसके लिए किया भी था। फिल तो करना पड़ेगा ना, एक एम वाली शेप में एम वाले एलिमेंट्स पर बनाना चाहिए, तो वो भी तो फिल करना पड़ेगा। वो हार्ड कोड करा था फिर? नहीं नहीं, वो तो उसी से किया था, लेकिन ये n/2 वाली कंडीशन को मैंने साइज -2 किया था तो भी एक्सेप्ट हो रहा था। उनके टेस्ट केसेस वीक होंगे, n/2 ही करना पड़ेगा। हाँ आता। हम्म। ठीक है, कोई पूछ रहा था ये इफ कंडीशन कैसे आई। मैं बोल रहा हूँ अगर एलिमेंट 0th कॉलम में है, सबसे पहले कॉलम में है, या तो एलिमेंट सबसे आखिर कॉलम में है, या तो एलिमेंट इधर वाले डायगोनल में ऊपर वाले पार्ट में है, या फिर एलिमेंट इस वाले डायगोनल में ऊपर वाले पार्ट में है। इन चारों में से कोई भी कंडीशन, मतलब या तो ये वाली डंडी, या ये वाली डंडी, या ये वाली डंडी, या ये वाली डंडी, इन चारों पार्ट्स में से हमारा एलिमेंट किसी भी एक पार्ट्स में से है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो फिर उसको 1 होना चाहिए, अदरवाइज उसको 0 होना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर वो सबसे पहले पार्ट 1 में है, या फिर वो पार्ट 2 में है, या फिर वो पार्ट 3 में है, या फिर वो पार्ट 4 में है, तो फिर उसको 1 होना चाहिए। अगर वो 0 निकल गया तो फॉल्स। अदरवाइज वो अगर किसी भी पार्ट में नहीं है तो उसको 0 होना चाहिए, लेकिन अगर वो 1 निकल गया तो दोबारा फॉल्स। तो अब ये चारों कंडीशन आई कैसे, ये देख लो। पहले तो हम क्या बोल रहे हैं, या तो पार्ट 1 में हो जाए, या तो पार्ट 2 में, या तो पार्ट 3 में, या पार्ट 4 में, और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इतनी बात समझ आई है कि चारों ऑपरेशंस के बीच में हमने और ऑपरेटर यूज किया है, चारों पार्ट में से किसी भी पार्ट में आ जाए वो। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 तो सिंपल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सिंपल है। या तो कॉलम 0 हो या कॉलम लास्ट कॉलम n-1, 6th कॉलम, कॉलम 0, कॉलम में से n-1। बाकी दोनों पार्ट्स अब ध्यान से सुनो। हमने जब डायगोनल पढ़ा था, व्हेन वी डिस्कस अबाउट डायगोनल, this diagonal was having the property row is equal to column. This diagonal was having the property row plus column is equal to n-1। यहाँ पर डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी होती थी, यहाँ पर सम वाली प्रॉपर्टी होती थी। याद आ रहा है कुछ, या अभी से भूल गए? याद आ रहा है? ठीक है। सो इफ द एलिमेंट इज ऑन लेफ्ट डायगोनल, लेकिन क्या लेफ्ट डायगोनल के सारे एलिमेंट्स पर 1 होना चाहिए? क्या ये पूरे डायगोनल पे 1-1-1 होना चाहिए? ऐसा है क्या? नहीं। सिमिलरली क्या राइट डायगोनल के पूरे डायगोनल पे 1-1-1 होना चाहिए? नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई राइट डायगोनल या लेफ्ट डायगोनल के सिर्फ अपर हाफ में 1-1-1 हो जाए, सिर्फ अपर हाफ में। तो उसके साथ साथ हमने क्या लिख दिया, भाई डायगोनल पे तो हो अच्छी बात है, डायगोनल पे तो हो अच्छी बात है, साथ के साथ एंड along with that row should be lesser than n/2, row should be lesser than 3, row should be lesser than 3, upper half it should be in the upper half। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे what are these 4 if conditions for or operators
First one is 0th column, simple. Second one is last column, that is also simple. This is upper half of left diagonal, upper half of diagonal, and this is upper half of anti-diagonal, upper half of anti-diagonal. इन चारों में से कुछ भी ट्रू है, वो भले ही दोनों चीजों पर है। जैसे ये एलिमेंट अपर हाफ ऑफ लेफ्ट डायगोनल पे भी है, अपर हाफ ऑफ राइट डायगोनल पे भी है, ये वाला तो कोई नहीं, दोनों पे है तो 1 होना चाहिए। ये भी इसको बोल रहा है भाई 1 हो जा, ये भी इसको बोल रहा है 1 हो जा। ये वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले उस पर भी है, मतलब 0th कॉलम पर भी है और लेफ्ट वाले डायगोनल पे भी है, तो भाई दोनों इसको बोल रहे हैं 1 होना पड़ेगा तेरे को। कोई भी एक बोले तब भी उसको 1 होना पड़ेगा, दोनों बोल रहे हैं तो होना ही पड़ेगा। तभी तो बोल रहा हूँ पॉज कर रहे हैं। अगर 1 मिलता तो ठीक था, किसी भी डायगोनल पर, मतलब किसी भी एम वाली शेप वाले सेल पर 0 मिल गया तो गलत है, किसी भी एम वाली शेप वाले सेल पर 0 मिल गया तो गलत है, तो इट इज नॉट एम मैट्रिक्स, फॉल्स। सिमिलरली किसी भी नॉट एम वाली शेप पर, इनके अलावा, इन सेल्स के अलावा किसी भी बाकी सेल पर अगर 1 मिल गया तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये भी गलत था और ये भी गलत था। यहाँ पर एम वाले पर 0 मिल गया, यहाँ पर नॉट एम वाले पर 1 मिल गया। जो एम के ऊपर नहीं है उसको 0 होना चाहिए, जो एम के ऊपर है उसको 1 होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन था। हेलो सर। हाँ सर मैंने एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा था, तो उसने मेरे को एक कोड लिखने को कहा कि फर्स्ट फिबोनाची नंबर हु हैज 5 डिजिट। तो अच्छा, तो सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? देखो वो अच्छा क्वेश्चन है, which has 5 नहीं, digits। मैंने सॉल्व कर दिया, उसने बोला कि ये n स्क्वायर में है, आप मुझे इसे बिग ऑफ n में सॉल्व करके दिखाओ। दिखा दो फटाफट। दिखाता हूँ सर। दिख रही है सर स्क्रीन? दिख गया, दिख गया सर दिखाओ। अरे भाई साहब ये क्या है? वो जावास्क्रिप्ट रख दो क्या? वो रिएक्ट था सर। सर ये रहा सर। सर ये आ रहा है, देखो सर आउटपुट भी आ रहा है 10946। ये पहला 5 डिजिट नंबर ही इंटरव्यूअर है। पागल है, ये n स्क्वायर नहीं है, ये n इंटू लॉग n है, मतलब n इंटू लॉग बेस 10 है ना सर? सही है ये कोड। भाई ऑब्वियसली हमें काउंट डिजिट्स करनी है तो डिजिट्स के लिए लूप तो लगाना पड़ेगा ना कि उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं। सर ये ऑप्टिमाइज है ना सर इस कोड के लिए? मोस्ट ऑप्टिमाइज है, बस छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। मतलब ये बोल सकते हो क्योंकि 5 डिजिट तक चेक करना है, तो ये जो अंदर वाला लूप है लाइन नंबर 15 पर, ये ना लगा के आप ऐसा बोल लो कि नंबर 10 से छोटा है तो वो 1 डिजिट का है, 100 से छोटा है वो 2 डिजिट का है, 1000 से छोटा है, इस तरह का इफ एल्स लिख दो, तो उससे ये लूप नहीं लगेगा। लेकिन लूप लग भी रहा है तो 5 बार ही तो लग रहा है, गेस और नो, 5 बार 2 बार, मैक्स टू मैक्स एक इंटीजर में 10 डिजिट हो सकती है। तो इंटरव्यू उसने रिजेक्ट कर दिया सर। कोई नहीं, ऐसे इंटरव्यू रिजेक्ट कर भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को भी स्प्रिंगलर में रिजेक्ट किया था, ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन दिया, उसको भी ऑर्डर ऑफ एन चाहिए था लेकिन तब रिजेक्ट किया था। और मैंने जस्ट इंटरव्यू के बाद वही क्वेश्चन सबमिट करा और सबमिट हो गया। और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब भी उसके अलग नशे थे, उसको लेना ही नहीं था, तो वही सीन है, आपको लेना नहीं था तो फिर उसने मतलब सही होते हुए भी गलत बता रहे हो, या फिर वो मतलब काम से तंग है, वो परेशान है, वो लाइन छोड़ देनी चाहिए उसे। मैनेजर ने उसको सुना दिया तो फिर वो सारी बिड़ात आपके ऊपर लगा रहे, निकाल रहे। ये पूछना था, थैंक यू सर। Okay, so then I am ending the class, but you will have a booster session, you will have a revision session with Shreya currently. Bye bye everyone, and my fever is most probably above 100. Bye bye, bye bye. Okay, let's begin. Am I audible? Am I audible? Okay. So do you have any doubts? Do you know why terminated due to timeout is coming? Yes, Dilsha, it is because your code is running, like time expected for the code is more.
it is basically runtime error, which means your time, like the code, your code is running in time greater than what is expected. Let's suppose if you are submitting the question on LeetCode and all, and they are expecting big of n solution, and you are trying to submit big of n square solution, then this error comes. But I think in LeetCode, the term they use is something else. Okay. Any more doubts? Or should we continue the revision? K loop. Okay, let's discuss the question. So the question was multiplication of two matrices, right? So first of all, we have learned in our mathematics when we can multiply two matrices. When can we multiply two matrices? Do you know this? Let's suppose I gave you this matrix 6, 7, 9 something. This is matrix 1, and at the same time I have given you some other matrix, which is can you multiply these two matrices? Tell me. What is the dimension of this matrix? This is 3 cross 3 matrix, right? And the dimension of this matrix is 3 cross 2, right? So what we need to check is if the number of columns in this matrix is equal to the number of rows, then these two matrices can be multiplied. They are multiplyable. Okay, this is the condition. And what will be the size of the resultant matrix after you multiply this? Now, how multiplication is done? You pick a particular row. You pick a particular row and you pick a particular column of this matrix, right? Is second wale matrix ka, you pick up one column and you multiply each of the element. Like this 2 will be multiplied with this 3. Then you will add up with what? This 3 will be multiplied by this 5. This 4 will be multiplied by this 5. Correct? So first very entry which you will get in your resultant array will be 2 into 3 plus 3 into 5 plus 4 into 5. Okay, so this will be 2 into 3 plus 3 into 5 plus 4 into 5. Okay, next we'll go to the next next column. So this time you will be on the same row, but the column will change. Now you have to multiply all the elements of this row with this column. So what you will obtain now? 2 into 4 plus 3 into 6 plus 4 into 1. Yes. So what you are trying is 2 into 4 plus 3 into 6 plus 4 into 1. Okay. Now what we can do is we have to go for the next. Does there exist any more columns in this? No. Now we'll go to the next row. When we go to the next row, who is this? Please mute yourself. Tachi, please mute yourself. Okay. When we move to the next row, all the elements of this row will be multiplied with this column first. Okay. So 6 into 3, what will be the element we will obtain? This will be 6 into 3 plus 7 into 5 plus 9 into 5. Correct? This 6 got multiplied with this 3, this 7 got multiplied by this 5, and 9 got multiplied with this 5. Now, for the next column value, you will multiply the same row with the next column value. Okay, so this 6 will get multiplied by 4, 7 will multiplied by 6, and 9 will be multiplied by 1. And the like whatever multiplication we will obtain, we have to add also. Okay, so like these, if you will do, you will obtain something here, and then you will move to the next row because there exists no more columns. Okay, so we move to the next row, and in the next row, then we'll take the first column, multiply, and you will obtain something. Then you will move to for the next column value, you have to take the same row, multiply it with the next column.
then in that case also you will obtain something. So what did you observe? What is the size of the matrix which is obtained as a resultant? It is 3 cross 2, right? Is the dimension of this also 3 cross 2? Which is nothing but the number of rows in first matrix and the number of columns in the second matrix. That is basically R1 into C2. Got it? And what should be the condition? This C1 should be equals to R2. If it is not so, we will not be able to multiply both this matrix. Okay, and why they should be equal? Tell me, if we are picking a particular row and we are picking a particular column, then we are making sure, tell me, if we are picking a particular row, till what extent I'm varying along columns, right? अगर एक पर्टिकुलर रो पे हैं तो हम कॉलम्स को वेरी कराकर कहां तक जा रहे हैं? लेसर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज 2 तक जाएंगे. 0 1 2. yes, and if you are multiplying it along columns, मतलब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें till where you are varying, in this column is fixed and rows are varying, and that also 0 1 2. तो ये रो, इसका रो और इसका कॉलम सेम होना चाहिए ना. अगर मैं बोल दूं इसमें एक और होगा, let's suppose 5 and 6. In that case, will you be able to multiply this matrix? This 2 will get multiplied with this 3, 3 will get multiplied by 5, 4 will multiply by this 5. And does there exist any more element? No. No. For that purpose, we have to make sure कि ये value and this value, that is C1 and R1, R2 should be same. Okay, got this? Got this? Got the concept? Now let's discuss the code. So one by one, we pick particular row. So if you are picking a row, till where you can vary? Rows are picked from the first matrix, right? So you are picking rows from 0 to R1 index. R1 is the total number of rows in matrix 1. Because you are varying your rows along matrix 1, so you have to take R1. And where are you varying your columns? कॉलम्स कहाँ तक वेरी कर रहे हैं? जो सेकेंड वाले मैट्रिक्स से कॉलम चूज कर रहे हैं, वो सेकेंड वाले में कितने कॉलम से वहां तक वेरी कर रहे हैं? लेट्स सपोज हियर 2 कॉलम्स वर देयर, सो वी ट्रैवल्ड थ्रू दैट 2 कॉलम्स, राइट? In this we are varying along rows, and in this we are varying along columns. First row, first column. First row, second column. Is it so? So for that purpose, we are looping using this loop. कहाँ गया? This column for each row. How मैम matrix 3 में input किस हिसाब से लिए? Matrix 3 में input किस हिसाब से लिए? Input कहाँ लिए matrix 3 में? वो तो आपको find करना है. Matrix 3 is the result, right? Matrix 3 is the resultant array. तो वो तो आपको calculate करके रखना है ना? Calculate करके you have to determine. उसमें input नहीं लेना है. सर ने लिया है, देखो कहाँ लिया है मैट्रिक्स 3 में इनपुट? वो तो कैलकुलेट हो रहा है ना, वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं, और जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगा, मैम हाउ फंक्शंस में पैरामीटर पास कैसे करते हैं? हाँ वो अभी डिस्कस करते हैं दीपक. बट ये क्या पूछ रहे हैं, मतलब एससीएन नहीं लिया. मैट्रिक्स 3 तो एक रिजल्टेंट एरे की तरह है. आप M3 को रिजल्टेंट एरे नाम दे दीजिए. इसमें इनपुट कहाँ ले रहे हैं? कहीं ऐसे लिखे क्या scn.next फॉर M3? नो, नहीं. म्यूट कर लो इफ यू हैव डाउट. ठीक है, तो वेयर वी वर, क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, सो वी आर लूपिंग, वी आर गोइंग थ्रू ईच रो, एंड फॉर ईच रो वी आर गोइंग थ्रू ऑल द कॉलम्स. अगर R1 पे है तो जितने कॉलम्स इसमें है पूरे को पूरे ट्रैवर्स किया. फिर if we are going for R2, then again we are starting from 0th column and till the number of columns present in second matrix, right? So for that purpose, we have used two loops. One for iterating along the number of rows in first matrix, and second is for iterating the number of columns in the second matrix. Are you able to relate both these loops? अभी ये समझ आ रहा है ये दोनों loop? मैम M3 equals to new int R1 और C2 ये पूछा मैंने. कहाँ पे?
M3 equals to new int R1 and अरे ये तो इनिशियलाइज कर रहे हैं, मैट्रिक्स बनाओगे तो पहले पहले मैट्रिक्स बनाना तो पड़ेगा। यहाँ इनपुट इस तरीके से लिया जाता है, ये वाला जो फॉर्मेट है ये इनपुट ले रहा है, मतलब कि जो जो वैल्यूज हमें कीबोर्ड से मिल रही है उसको एक एक करके आप इस पे इस रो कॉलम वैल्यू पे असाइन कर दो। ये मतलब है कि आप मैट्रिक्स को सिर्फ फॉर्म कर रहे हो। अभी इसके बाद अगर आप मैट्रिक्स प्रिंट कराओगे ना तो 0 0 0 स्टोर होगा, क्योंकि इंटीजर का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इंटीजर 0 है। ठीक है, तो अभी इनपुट नहीं लिया, वो तो सिर्फ एक मैट्रिक्स को फॉर्म किया है मेमोरी में। उसके लिए इनपुट्स कैसे ले रहे हैं, इनपुट्स नहीं ले रहे हैं, इसके लिए हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं और जहां पे भी हमें असाइन करना है वो वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। तो R1 C1 नहीं ले सकते मैम? R1 C1 कैसे लेंगे ये बताइए। यहाँ पर जब हमने दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए तो इसमें जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वो 3x2 का ना ऑब्टेन हुआ, वो 3x2 का ऑब्टेन हुआ कि नहीं? 1 2 3 रोज एंड 1 2 कॉलम्स। हाँ, तो 3x2 कैसे क्या है? 3 is the number of rows in first matrix and 2 is the number of columns in the second matrix. Now got this? And why this k? Why we have used this k loop? This k is, and this k will be looped over either R2, यहाँ R2 लिखो चाहे C1 लिखो, बात बराबर, क्योंकि R2 और C1 बराबर है। R2 and C1, if they're equal, then only if you are multiplying both the matrices. If R1 and C1 and R2, if they are different, then we won't be able to multiply and we will straight away return. Okay, but if they are equal, it means we will be able to multiply both the matrices. So either you write R2 here or either you write C1 here. It will execute that many number of times. मैं क्या बोल रही हूँ कि एक रो लिया, let's suppose 6 7 9 we picked up and this column 4 6 1 we picked up. Okay, so the number of columns along this row and the number of rows along this is same or not? बताओ मुझे पहले। The number of rows along the number of columns along this is 3, correct? That is this 3, and the number of rows along this is 3. क्योंकि के लूप इसलिए लिया क्योंकि इस 6 को पिकअप करके हम एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे जा रहे हैं, और वो वेरी कैसे कर रहा है, कितने टाइम्स वेरी कर रहा है। ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप एक बार 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 1 टाइम वेरी किया, फिर 7 को 6 से मल्टीप्लाई किए 2 टाइम्स वेरी किया, फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स वेरी किया। तो 3 टाइम्स क्यों वेरी किया? क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज सेम है। आर यू एबल टू रिलेट? Is what is same in both this matrix? Tell me what is the criteria for multiplying this matrix? The number of rows and the number of columns in this matrix and the number of rows should be same. ये समझ आया कि इसमें the number of columns and इसमें the number of rows should be same. Yes. Now if you are multiplying along this, मतलब हर column value को हम हर row value से इस वाले मैट्रिक्स के हर रो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जितने कॉलम्स हैं उतने ही इसमें रो हैं। ये तो हम पहले ही इंश्योर कर लिए ना, तो उसीलिए हम के लूप का यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू वन बाय वन विजिट ईच एलिमेंट एंड एड अप, लाइक मल्टीप्लाई एंड देन टुगेदर एड देम अप। अभी कुछ समझ आया, लाइक समवॉट क्लियर हुआ? Now you will go to a particular index of this resultant array and you will add up with what? The multiplication you just obtained. एक बार try run कर दूं क्या? If still you have doubt, Deepak asked me a doubt. पहले Deepak का doubt. Deepak, are you there? Deepak, yes, he's there. ओके, आपका क्या क्वेश्चन था कि पैरामीटर्स क्या पास करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना? अनम्यूट कर लो खुद को। पैरामीटर्स मतलब कि लेट्स सपोज वी आर पासिंग m1 एंड m2 इन दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। तो m1 क्या है? एक मैट्रिक्स है, ठीक है। m2 क्या है? m2 भी मैट्रिक्स है। मतलब कि हम एक फंक्शन में m1 एंड m2 पास कर रहे हैं, टू मैट्रिसेस आर पास्ड।
और आप ये नहीं कर सकते कि M2 को पहले M1 को यहाँ पहले भेजो और यहाँ पे M1 पहले रिसीव करो और M2 बाद में, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज वी आर मेकिंग अ कॉपी ऑफ इट, लाइक दिस इज पास बाय वैल्यू काइंड ऑफ थिंग, कि आप वैल्यूज मैट्रिक्स को पास कर रहे हो और यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रहे हो, लाइक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो जिसमें वो मैट्रिक्स का इनपुट ले रहे हो। आप यहाँ से M1 पास कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप पहले में M1 ही लिखोगे, दूसरे में आपने M2 पास किया है तो यहाँ पे आपको M2 ही लिखना पड़ेगा। यू कांट लाइक राइट फर्स्ट M2 एंड M1, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप M2 में M1 वाले इनपुट्स ले रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू पास M1 and M2 from here, but here you write M2 and then M1, then what will happen? Since you are writing M2 here, so M2 will have the contents of M1, क्योंकि यहाँ से आपने तो M1 पास किया था ना फर्स्ट के लिए, पर आपने इनपुट किस में लिया? M2 में। मैम कभी हम रो भी पास कर देते हैं और कभी कॉलम भी पास कर देते हैं, और एट 2 मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में काफी पैरामीटर्स थे। अच्छा, अब उस टाइम हम इसलिए पैरामीटर्स पास करते थे क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि लेंथ हम कैसे निकालते हैं। वर वी एबल टू फाइंड लाइक नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दैट टाइम यूजिंग दिस फॉर्मूला? नो। पर वहां पर भी आप ये काम कर सकते हो, मत करो मैट्रिक्स में पास, वहां पे आप इस फॉर्मेट का यूज करके लेंथ कैलकुलेट कर लो। अब या तो वहां अब दो तरीके हो सकते हैं, यहाँ से आपको ऑलरेडी R1 C1 ये सारी चीजें पता है तो उसे फंक्शन में पैरामीटर की तरह पास करके यहाँ से रिसीव कर लो। अगर ये नहीं करना चाहते तो ये फॉर्मूलाज लगा के, ये फंक्शंस लगा के आप लेंथ कैलकुलेट कर लो। M1 dot length means the number of rows. Take this input in R1. M1 of 0 dot length means the number of columns. Take and store it in C1. Now, did you get this? Okay. So, अभिषेक का क्या क्वेश्चन था? R2 तक क्यों लूप चलेगा? K लूप R2 तक नहीं चलाना है। If you want to run till C1 तक चला लो। आप मुझे बताओ, ये K लूप नहीं समझ में आ रहा, I think. Okay. इधर यू के लूप जो है, या तो वो आप 0 से R2 चलाओ या 0 से C1 चलाओ, बात बराबर हुई कि नहीं? बिकॉज C1 इज इक्वल्स टू R2। टेल मी, यहाँ पे हम क्या करते थे कि C1 की वैल्यू R2 के बराबर है तभी मल्टीप्लीकेशन वी कैन डू यू नो दिस? ये तो पता है ना। तो C1 R2 के बराबर है तो आप 0 से R2 चलाओ चाहे 0 से C1 चलाओ, बात सेम हुई। पर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगर किसी एक रो में आपने जो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स पे रो फिक्स किया है ना, उसमें जितने कॉलम्स हैं उतने ही इस मैट्रिक्स में रोज हैं, इसलिए के लूप इन दोनों पे चल रहा है। बिकॉज मैम जैसे हमने इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था, फॉर्मूला ना यूज कर हम सीधा पैरामीटर, हाँ पैरामीटर्स में पास कर सकते हो, वहां से R1 C1 R2 C2 पैरामीटर्स में पास करके और जिस फंक्शन में आपने पास किया है वहां पे आप रिसीव कर लो। इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू पास इस पैरामीटर्स, बट व्हाट विल हैपन ना, इफ यू विल डू क्वेश्चंस ऑन लीड कोड then you don't have control over input outputs parameters and all, so there you have to calculate the function length using dot length function and the whatever. Did you get this? अगर आप लीड कोड या JFG पे क्वेश्चन करोगे तो what will happen, you have to use this because they in that on those platforms you just have to implement the functionality, not input output and everything. Okay, and even on the code judge where MCT is conducted, there also they just want you to implement the functionality, so there also you will have to know like implement this thing. Okay, Abhishek, if still you have doubt, tell me. If still you people have doubt, please tell me. Or if you want, I can try run also, no problem. एक एक करके 3 लूप से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा पर ट्राई रन कर दूंगी। अच्छा ठीक है, ट्राई रन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेयरिंग रोज, ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट कॉपी द कोड, लेट मी फर्स्ट कॉपी द code. I'll be just copying the main part of the code, not everything. Okay. और M3 R1 और C2 का क्यों बना ये भी पता चल गया होगा आई थिंक।
Now what is happening? First of all, we are taking row equals to 0. Row is equals to 0 means we are present on along this, because this is the 0th row, and column is also 0. Column is also 0 means we are present along this. Correct? Now what we are doing is k initially we are taking 0. Now if k is 0, then matrix 3 0, 0 row column value equals to matrix 3 0, 0 plus matrix 1 whatever value is present at 0, k. 0, k मतलब 0, 0 पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है वो यू मल्टीप्लाई इट विद m2 0, 0. अभी ये थोड़ा नहीं समझ में आएगा क्योंकि सब 0 है, तो this thing will be happening in the first iteration. So what will be stored in m3 here? Tell me. m3 में initially तो 0 stored था, अभी तक तो 0 ही stored था. अब उस 0 पे हमने क्या store किया? इन दोनों का multiplication. So that is 2 into 3 will be stored. So 2 into 3 will be stored. That is 6 is stored. Correct? Now what will get updated is k. अभी k क्या हो गया? 1 हो गया. k अभी 1 हो गया मतलब मैट्रिक्स 3 के 0, 0 पे ही जाओ, उसी रो कॉलम वैल्यू पे जाओ. कहाँ पर क्या करना है? वहां पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है, उसी 0, 0 पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसमें मैट्रिक्स 1 ऑफ व्हाट 0, 1 0, 1 that is row k. row is 0, row is still 0 but k is now 1. so 0, 1 पे जो भी वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? मैट्रिक्स 2 में which value? k comma column means 1, 0. 1, 0. Why 1, 0? 1, 0 मैट्रिक्स m2 of 1, 0. 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो अभी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है मतलब कि उसी रो में और उसी कॉलम में, बट मूव अलोंग in this move along columns and in this move along rows. So that is getting varied using k. So what will happen is m3 में क्या stored था? 6 stored था last time. अभी 6 के साथ क्या add up हो जाएगा? Matrix of 0, 1 means 3 into matrix of 1, 0 that is 5. तो 6 plus 3 into 5 मतलब 15 plus 6 that is equals to 21. अभी resultant के 0, 0 पे क्या stored होगा? 21. Now did you get this? अभी क्या होगा? k की वैल्यू 2 हो जाएगी. Still k is lesser than r2. You can say either r2 or you can either say c1. ठीक है, कुछ भी you can write. Now what will happen is matrix 3 of 0, 0 you will go to the same row column value. Row column fixed है इसलिए matrix of 0, 0 fixed होगा. अभी क्या you are writing? जो भी 0, 0 पे पड़ा है उसमें क्या ऐड कर दो? मैट्रिक्स ऑफ 1 का 0, 2 0, 2 मतलब 0th रो एंड सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? m2 ऑफ 2, 0 2, 0. इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज इक्वल्स टू व्हाट वाज इनिशियली लाइक स्टोर्ड इन द लास्ट इटरेशन? इट वाज 21. सो इन 21 add up 4 into 5. 4 multiply this 4 with this 5, which is 4 5s are 20, that is equals to 40. Got this? अभी कॉलम की वैल्यू अपडेट होगी, अभी कॉलम की वैल्यू अपडेट होगी. रो will still be 0 but column gets updated, and similarly k has to start from 0, so you will execute for k equals to 0, similarly k for equals to 1, and similarly k equals to 2. ये 0, 1, 2 k को इसलिए ले रहे हैं बेसिकली k किसके अलॉन्ग वेरी कर रहा है? c1 या r2 के अलॉन्ग? अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज ट्राई रन बाय योरसेल्फ, आई वुड सजेस्ट. ओके, टेल मी. बस k का प्रॉब्लम हो रहा होगा. तो k क्या है? क्योंकि हम इसके अलॉन्ग वेरी कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें और इसमें k कैसे वेरी कर रहा है? अलॉन्ग रोज. तो रोज और कॉलम्स तो ऑलरेडी सेम है. नाउ इज इट क्लियर? If you people have any doubt in this question, please ask. So that's all. Okay. Any more question which was done today? कि सिर्फ यही क्वेश्चन हुआ था?
एम वाला हुआ था। अच्छा, तो एम वाला तो मैंने ऑलरेडी 2 बार 3 बार किया है क्लास में। आप लोग को उस पे अभी भी डाउट था क्या? मैं बता दी थी फिर भी एम वाला क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर ने ऑप्टिमाइज करा उसको, मैंने भी तो ऑप्टिमाइज ही किया था, मैंने भी तो ऑप्टिमाइज ही किया था एग्जैक्टली जो क्लास में हुआ था। मतलब मैं लिंक है किसी के पास वो वाली टेस्ट की, तो मैं दिखाऊं एग्जैक्टली वही किया था जो क्लास में अभी हुआ। लिंक होता तो प्लीज, लाइक आई वुड हैव शोन यू, वेट आई विल शो यू मेरा क्या कोड था। Please show. इट इज गोइंग डिस्कशन क्या किया मैंने भी एग्जैक्टली वही चीज किया है। हर रो कॉलम वैल्यू पे जाकर चेक करो कि एम शेप में है, अगर एम शेप में है और वहां उस एम शेप के अलोंग 0 मिल रहा है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, और अगर एम शेप वाले कोऑर्डिनेट्स पे नहीं है और वहां पर 1 मिल रहा है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ऐसे ही तो क्लास में भी हुआ था ना। बट व्हाट आई डिड हियर इज कि एंड मैंने एक ही लगाया, इंस्टेड ऑफ 2 आई जस्ट केप्ट 1 एंड इन दैट एंड वाज विथ both the diagonal values. सर ने ऑप्टिमाइज करो। मैम मुझे नेस्टेड लूप में अभी भी प्रॉब्लम होता है थोड़ा थोड़ा, कैसे इंप्रूव करूं? किस टाइप का नेस्टेड लूप अजमेर? जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन वाला है तो ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी। बट अगर और कोई क्वेश्चन है जैसे ये सारे में नेस्टेड लूप्स में प्रॉब्लम है तो बताओ। मैम चैनल की लिंक देने वाली थी आप इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए चैनल के लिए? I think you are talking about Telegram groups. Yes, ma'am. Telegram groups. हाँ, तो Telegram groups, okay, I'll share you the link. Wait, मल्टीप्लिकेशन वाला तीनों, हाँ 4 लूप में तो ऑब्वियसली मुझे भी प्रॉब्लम होगी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पर अभी इस क्वेश्चन में 3 लूप लगाया तो, पर तीनों लूप का पर्पस क्या है और वो कैसे और क्यों वेरी कर रहे हैं, ये चीज समझ आ गई तो दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको समझ में आ गया कि हमने के को C1 या R2 तक ही क्यों वैरी कराया और कहाँ तक वैरी कराया, तो अगर ये चीजें समझ में आती है तो ऑब्वियसली अभी स्टार्टिंग है तो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। ठीक है, चैनल के लिंक आई शेयर यू द लिंक ऑफ अ चैनल वेयर jobs like jobs are getting posted frequently, so you can refer that. Wait for a minute, I will just give you, wait. I am sharing the link in chat. Okay. You can try out this. If it doesn't work, tell me. Okay. Just try to join whether you are able to access this link or not, tell me.
We have 15 minutes more. If you want to ask something, you can ask. If you want to ask something, you can ask, or I'll just end the class. All the best for tomorrow's test. Most probably matrix से questions आएंगे कल. No doubt, ma'am. Okay, those who want to leave can leave. Asmail, you can leave now. But अगर किसी को कोई question पूछना है, तो they can ask, or else I'll end the doubt session. Oh, sorry, booster session. Okay. No problem. मैम मैपिंग थोड़ा सा बता दीजिए. कौन सा मैपिंग? कौन सा मैपिंग? अभिषेक. मैट्रिक्स डॉट लिंक मैपिंग, वो बताने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. जैसे कोई आप मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, तो वो किस फॉर्मेट में क्रिएट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक एड्रेस, इफ 2D मैट्रिक्स की क्रिएट होता है ना, 2D मैट्रिक्स क्रिएट होता है, तो वो किस तरीके से क्रिएट होता है? एक मेमोरी में पहले एक 1D एरे बनता है. ठीक है, मेमोरी में एक 1D एरे बनता है. तो उस 1D एरे का रेफरेंस जो है, हर एक इंडेक्स पे हम किसी वैल्यू की जगह एक और इंटीजर एरे बनाते हैं. लाइक वो मैं एग्जैक्टली कैसे बताऊं? इट वुड बी बेटर कि अगर आप उस क्लास को रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगी भी तो नहीं समझ में आएगा. बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ दैट ऑल स्ट्रक्चर एंड ऑल. ठीक है, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर मैं यहाँ बता दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, भले ही क्लियर ना हो. ठीक है, तो प्लीज आई वुड सजेस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस. ओके, एनी मोर डाउट्स? No doubts are there? There are 23 participants and barely 2 or 3 of them respond throughout the class. Okay. So let's end the class because nobody has doubt, I guess. Should we end? Or one thing, make sure, tell me if a form pops out when you end the class from your side, or either end, I end the class. So do you fill it on regular basis? Okay, good. Please fill that form, okay? Let's end the class now. कभी कभी नहीं, हमेशा fill करो. ठीक है? Now let's end the class. Let's meet on Monday, okay? All the best for the test.